आगत करिबारे रेकॉर्ड करिवे निर्मला। बजेट रे कौन रही आभिमुख्य, गरीबों कौन रही योजना, आयकर दातांग कौन रही निर्मला विजन, ताकू नहीं बढ़ुची हार्टबीट। तबे गत फेब्रुआरी रे आगत अंतरीण बजेट रे देशवासी को सेभली किछि उपहार देई नथिले भी निराश कर नथिले निर्मला। मोदी 3.0 सरकार भारत को विश्व अर्थनीति में परिणत करने सरकार आभिमुख्य उपर रही देशवासी नजर। वर्तमान समय ये तीनोटी गुरुत्वपूर्ण दिग जहाँ को नहीं संभवतः 2024-25 वर्षर आर्थिक वर्षर बजेट मुख्यतः आधारित रहिबो एवं ये बजेट्र जो तीनोटी दिग एथिरे आपणकर सोशल सेक्टर गोटे रोची, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गोटे रोची, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बा एआई इंटेलिजेंस ता सहित एग्रीकल्चरल सेक्टर ताकू केमती आमे अधिक रु अधिक विकसित करै परिबा। कारण विकसित भारतर नारा 2023-24 बजेट रे थिला एवं 24 रो इंटरिम बजेट रे थिला, जहाँ को नहीं आजिर ये स्वतंत्र उपस्थापन। तेरे दर्शक बंधु आज आसुछि बजेट आउ निर्मला सीतारमण बजेट पेटी रे भारत वर्ष पई कौन रही ये भारत बजेट समस्त भारतवासी चातक भली चाहि बसी आज बजेट रे कौन रहुछि कहीं तृतीय पाली सरकार रो ये प्रथम बजेट आसुछि आउ जेतबेले ए बजेट आसुछि केंद्र बजेट तापर समस्तंकर नजर रही 2024-25 वर्ष पई बजेट आगत करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। 2024-25 रे 47 लाख कोटी टंकार बजेट आपण देखिबे 47 लाख 66 हजार कोटी टंकार बजेट जहाँ आपणकर फेब्रुआरी 1 तारिख रे जो इंटरिम बजेट उपस्थापन करा जायतिला अंतरीण बजेट तार प्रेडिक्शन सेतबेले दिया जायतिला एवं एथर बजेट रे मुख्यतः 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व जो सरकार थिले वर्तमान मेंटो सरकार एनडीए सरकार आगामी समय निर्वाचन मध्य रही तेणु क्यों क्यों वर्गों को अधिक गुरुत्व दिज्व अधिक फोकस रहा 2024-25 अंतरीण बजेट रे कौन थिला से संपर्क अविनाश निश्चित भाव में से संपर्क में कहवा किंतु आज बजेट उपर जो नजर रही सस्ता महंगा कौन हम लोकंर नजर रही निर्वाचन में मौलिक मुद्दा को आड्रेस करा जो भाव में आप बेरोजगारी कहतु एवं एसहित दर वृद्धि दर कथा कहतु वर्तमान समय अधिक भाव में रही सरकार अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट से कथा को एक प्रकार स्वीकार करुँच तेणु आज बजेट उपर समस्त नजर रही मौलिक मुद्दा को किभली भाव में आड्रेस जमती अविनाश आप कहते 2024-25 जो अंतरीण बजेट तार जो मुख्य बिंदु थिला तापर हम नजर रखिबू जे करज व्यतीत मोट रिसिप्ट 30.80 लाख कोटी टंका रही मोट व्यवराधर परिमाण को जदि आप देखिए 47.66 लाख कोटी कर आदाय परिमाण 26.02 लाख कोटी रही राज्यगुड़ी को कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.3 लाख कोटी रही 2024-25 नियंत राजस्व परिमाण जीडीपी 5.1% जीडीपी अभिवृद्धि हार 10.5% लक्ष्य रही तेणु ए जो मुख्य बिंदु गुड़ी को अंतरीण बजेट रे सरकार आनी परवर्ती समय किभली भाव में जो फुल बजेट आसुची मोदी तृतीय पालीर प्रथम फुल बजेट जितेबाला आसुची ता उपरे अविनाश नजर रहिबो। निश्चित भाव में मोदी सरकार तृतीय पालीर यह हेउछि प्रथम बजेट और बजेट आकार 47.66 लाख कोटी टंका एथर हम एथर जो प्रो पीपुल स्कीम जो कथा कहुच्छी जनकल्याणकारी योजना पुणी थे कंटिन्यू करा ना एथर किसी योजनारू अर्थ काट हम टैक्स रिफॉर्म्स एंड रिलीफ ए संपर्क में कौन रही तेबे या सहित आम टे इतिहास उपरे नजर पकाइबा जे कौन वास्तविक बजेट्र प्रक्रिया इतिहास आईन बजेट प्रस्तुति प्रक्रिया सामिल व्यक्ति को कह जाए बजेट्र कोर ग्रुप गतकाली से फोटो आप देखिथे सबु विभाग सचिव मुख्य अर्थ परामर्शदाता एमाने समस्ते एथिरे रही था एक 50 जनिया टीम गठन करा जाए जार जे राजस्व सचिव था तार नेतृत्व नहीं था 1970 प्रथम महिला भाव में बजेट उपस्थापन करते इंदिरा गांधी एवं हालुआ उत्सव आरंभ हुए बजेट्र प्रक्रिया आप देखिए 5-6 दिन तले आपणकर नॉर्थ ब्लॉक रे से उत्सव होता हालुआ उत्सव पर सबू कर्मचारी एक गोटे स्थान में एकत्रित होती संपृक्त कर्मचारी को परिवार सहित कथा भी दि जाए न था कारण बजेट्र जहाँ जहाँ आगत हबार अच्छी लीक हबार संभावना रही है बजेट्र 2 दिन आगु ये सब बंद करा जाए धारा 112 अनुसार प्रति वर्ष बजेट आने केंद्र सरकार बाध्य ये आय व्ययर गोटे वार्षिक हिसाब 1955-56 पूर्व बजेट इंग्राजी रे छपा जाऊला परवर्ती समय
1860 प्रथम बजेट उपस्थापन करथिले ब्रिटिश अर्थमंत्री जेम्स विल्सन। ये इतिहास कारण इतिहास जानिबा यथेष्ट आवश्यकता रही। स्वाधीन भारतर प्रथम बजेट आगत करथिले आर.के. षण्मुखम चेट्टी। से सेतेबेले प्रथम बजेट स्वाधीन भारत उपस्थापन करथिले एवं नवेम्बर 26 रे 1947 मसीहा नवेम्बर 26 रे आगत करथिले प्रथम बजेट। ये इतिहास आईना रे बजेट 1947-48 रे बजेट परिमाण थिला 198 कोटी टंका। पूर्वरु फेब्रुआरी शेष कार्य दिवस रे आसुथिला बजेट कारण मार्च मास पर एप्रिल 1 रु आपणकर फाइनेंशियल इयर ताकू धरा जाए गोटे आर्थिक वर्ष 2016 रु फेब्रुआरी 1 रे आगत है बजेट एवं जो प्रक्रिया एबे भी जारी रही। प्रति वर्ष फेब्रुआरी 1 रे बजेट आगत करुछंती केंद्र अर्थमंत्री लोकसभा 2016 रु गोटे संगे साधारण बजेट एवं केंद्र बजेट आगत करा जाउछि अर्थात रेलवे बजेट को भी मिसई दिया जाइछि। निश्चित भाव में ये थिला इतिहास आईना रे बजेट किभली भाव में रही किए कोभली भाव में प्रथमे बजेट आगत करथिला बजेट रो इतिहास कौन किंतु जेतेबेले एक्सपेक्टेशन रो कथा कहूचे लोकंकर आशा कथा कहूचे सीमित संबल किंतु एठी असीमित आकांक्षा रही लोकमानकर तेणु एथर बजेट रे कौन रही आशा करा जाउछि अक्षय शक्ति ग्रीन एनर्जी सौर शक्ति उपयोग को फोकस करा जाउछि एथर बजेट रे विशेषकर ए बिंदु पर नजर रहिबो विभिन्न क्षेत्र में पुंजीनिवेश जरिया किभली भाव में अभिवृद्धि वृद्धि करा जाय परिबो जीडीपी वृद्धि करा जाय परिबो से ऊपर नजर रही जनगणक पई अधिक व्यय बराद एवं डिजिटल भित्तिभूमि को गुरुत्व दे जाउछि जेतेबेले 2024 मसीह आम आसी पहुंचती चीन रो विकल्प हेबा दिगरे सरकार मध्य प्रयास करिवे गोटे बड़ अर्थनीति आड़ को मुहुछि भारत और $5 ट्रिलियन जो अर्थनीति फोकस रही से लक्ष्य केमती पूरण हो ता दिगरे मध्य कार्य करा जाय परिबो अर्थनैतिक स्थिरता घरोईकरण उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाउछि एथि सहित जदि आपण देखिबे एमएसएमई सशक्तिकरण जीएसटी सरलीकरण जोटा प्रमुख दाबी रहुछि भिन्न भिन्न राज्यर ता उपरे मध्य फोकस करा जाय पारे सरलीकरण कर व्यवस्था देशवासी आशा रही सबू टैक्स रिफॉर्म कथा सामना को आसुची मुद्रास्फीति नियंत्रण सांग को दरदाम वृद्धि उपर रोक ये गोटे प्रमुख मुद्दा वर्तमान समय भारत वर्ष में अधिक निजुक्ति सृष्टि करने को कैपिटल एक्सपेंडिचर भिन्न भिन्न बाटे भित्तिभूमि ठार आरंभ कर अधिक खर्च पर आशा रही सबू वर्ग को खुशी करने को बजेट रे निहाती भाव में उद्यम करि पारंती सरकार चाषी श्रमिक स्टार्टअप उद्योगी उपहार मिल पारे ए दिगरे समस्त नजर रहुछि अविनाश जेतेबेले भिन्न भिन्न वर्ग भिन्न भिन्न एक्सपेक्टेशन रखुचंती ये कोट ना कोठी सरकार को टिके अधिक चाप करिवो चापग्रस्त करिवो एवं चाप तो एया रहिबो अविनाश जेतेबेले एथर 3.0 जो सरकार रहिछि ये भागवाली सरकार रहिछि एवं ये माने आगामी समय किभली भाव रे ए संपर्क अविनाश मु टिके सूचना देवा पई चाहूची मार्केट ओपन हो जाइछि सेंसेक्स 80,502 पॉइंट ओपन हला 102 पॉइंट आपणकर डाउन सेंसेक्स किंतु निफ्टी जदि आप देखिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी 69 पॉइंट उपरे 24,568.90 रे निफ्टी ओपन है बैंक निफ्टी 52,511 230 पॉइंट अर्थात 0.44% बढ़ोतरी बैंक निफ्टी एवं निफ्टी ये ग्रीन रे ओपन होती किंतु सेंसेक्स आप जो देखिए रेड रे क्लोज आम सहित गेस्ट अच्छा आम विशुद्ध भाव में परिचय करदेबा तापरे आमे विशुद्ध भाव में आलोचना को आसीबा सहयोगी अविनाश अच्छा निश्चित भाव में आमे जो चर्चा करुले जे एक्सपेक्टेशन कथा चर्चा करुले जितेबाला मोदी सरकार जो तृतीय पाळीर ये प्रथम बजेट रहुछि और बजेट आकार जितेबाला 47.66 लाख कोटी रहुछि साधारण वर्गों पई खुशी खबर आसीबो कि ए ऊपर समस्त नजर रहुछि पूर्णांग बजेट रे आयकर स्लैब रे परिवर्तन हबो कि जो बड़ प्रश्न अछि बजेट को लेकी दरदाम वृद्धि नियंत्रण पई अर्थ मंत्री मिशन कौन प्रकृत रे रहिबो किछि लोक मान को ए संपर्क रे संदेश देबे कि बजेट रे सब वर्गों को खुशी करबा को बजेट रे केंद्र सरकार मध्य उद्यम करि पारंती काहेकि डिपेंडेंसी बढ़ी सरकार आयकर टिकस स्लैब रे विशेष किछि परिवर्तन नै आशंका मध्य रही हुए तो सरकार किछि परिवर्तन करि न पारंती ए कथा मध्य कहा जाउछि चाषी श्रमिक स्टार्टअप उद्योगी पई उपहार मिलिबार मध्य संभावना कम ए कथा को मध्य देखा संभावना रही निजुक्ति सृष्टि उपर मध्य उभय केंद्र एवं राज्य सरकार मध्य गुरुत्व दे पारंती भित्तिभूमि क्षेत्र में अधिक पुंजीनिवेश हम हुए तो ये चाकरी अधिक सृष्टि करि पारे राज्य सरकार सुभद्रा योजना कहतु धारर एमएसपी वृद्धि प्रतिश्रुति मध्य होइछि टेक्नोलोजी जरिया समस्त को सबुठी शिक्षा ए कथा मध्य अविनाश रही निश्चित भाव में ये सीधा सड़क चित्र आपन देखुछंती नॉर्थ ब्लॉक सामनारू जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अच्छा अर्थ विभाग सचिव अच्छा अर्थ विभाग राष्ट्रमंत्री अच्छा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी अच्छा ये गोटे पारंपरिक प्रक्रिया मुझे उल्लेख करुली जे प्रति थर 11टा बेले बजेट आगत हम लोकसभा ता पूर्व फाइनेंस डिपार्टमेंट सामने ये गोटे फोटो अप करा जाए कारण वर्षर ये गोटे वर्षर आय व्ययर हिसाब
एवं कौ विभाग वारी केते टंका खर्च हेबो तार गोटे आकलन से हिसाब रे केउ क्षेत्र रु केते टंका आसुची केउ क्षेत्र पई केते टंका खर्च हेबो। भारत भली गोटे गणतांत्रिक देश रे जोडी 140 कोटी लोक रहउचंती विभिन्न बयस वर्गर लोकंक पई बजेट उपस्थापन करा जाय। सेथिरे महिला अछंती, युवक अछंती, सेथिरे चाकरिया अछंती, सेथिरे श्रमिक क्षेत्र रहिचंती, सेथिरे टूरिज्म टू नै टेक्सटाइल पर्यंत बहु वर्ग शामिल रहिछि। आपण देखुचंती निर्मला सीतारमण डिजिटली ये बजेट उपस्थापन करछंती। पूर्व आपण देखिथिबे ट्रक रे केभली भाव रे बजेट रो कॉपी लोड हे जाय पार्लियामेंट को, किंतु गत 3-4 वर्ष हैला डिजिटल माध्यम रे ताकू से बजेट उपस्थापन करूछंती एवं तांको सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री अछंती, तांको सहित अन्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी अछंती। से राष्ट्रपति को मध्य भेटिबार कार्यक्रम रही। तापर से पार्लियामेंट को जिबे। पार्लियामेंट रे आज 11टा बेले लोकसभा रे बजेट आगत हबो 2024-25 आर्थिक वर्षर, जो मुख्यतः 2024-25 वर्ष एथिपाई अनेक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण, कारण आसंता 5 वर्ष पई ये सरकार रो विजन कोन रही। नुआ सरकार आसीबा परे केउ सेक्टर को अधिक से फोकस देबे। मुद्रास्फीति बढ़ी कि अछि, खाद्य सामग्री दर हुहु होई बढ़ुछि, विभिन्न क्षेत्र में महंगा स्थिति तापरे भी आपण एक सब केमती नियंत्रण को रखिबे, कर केमती कमेइबे, आपणकर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपण बढ़े बढ़े चलछंती, किंतु तार इन रिटर्न आपण कोन पाउछंती, आपण एसेट क्रिएट करछंती, किंतु 65% एसेट आपण रीयूज करि पारु नाहंती। बैंक डिमर्जर कथा आसुला, एभली अनेक दिग अच्छी जहाँ संपर्क में विशुद्ध भाव में चर्चा करबा। आम सहित राजनाथ त्रिपाठी अच्छा स्टूडियो रे, अर्थनीति विशेषज्ञ तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट आम सहित मनीषा दास पट्टनायक अच्छा कांग्रेस नेत्री। उभय को आम स्वागत करबा आज कार्यक्रम को। आम सहित अन्य अतिथि जोड़ी हे परवर्ती समय अविनाश प्रदीप पंडा भी आम सहित अच्छा। हाँ, प्रदीप पंडा आम सहित अच्छा। आम विशुद्ध भाव में आलोचना आगू को बढ़ेबा। सुक्त राजनाथ त्रिपाठी आपण पाखु आलोचना आरंभ करबा। आज गोटे बड़ दिन, कारण जो माने साधारणतः मार्केट विशेषज्ञ बजार विशेषज्ञ से माने अनेक दिग को एथि देखती जे 2024-25 बजेट रे जेतेबेले मुद्रास्फीति एते ऊपर रही, जेतेबेले सबु खाद्य सामग्री दर अधिक मात्रा रही, सरकार सामने अर्थ मंत्रालय सामने सबुठु बड़ चैलेंज आज दिन में कौन बजेट रे कौ दिग को अधिक फोकस दे पारंती? सबुठारु बड़ चैलेंज जदि कहबे गोटे होची फूड इन्फ्लेशन, जोटा कि मुद्रास्फीति, खाद्य उपरे मुद्रास्फीति। कारण भारत वर्ष भाया गोटे बड़ कंट्री जोटा कि 143 कोटी ऊर्ध्व पॉपुलेशन अछंती, एवं सेटा सेमानकु खाद्य सुरक्षा दवा सबुठु बड़ चैलेंज। दो गवर्नमेंट एबे समस्त को जो किछि परिमाण रे चाउल माने एक्चुअल बहुत गुडे लोक को दिया जाउची, किंतु सबुठारु बड़ जिंस होची जो खाद्य सामग्री आमे कहूचे सेथिरे जो पनीपरिबा विशेष कर रहिला, पनीपरिबार दर देखिए बहुत उच्चा रोचे। तार गोटे मूल कारण होची आमे केवल खाली बजेट रो साइजटा बढ़ाऊे, एक्सपेंडिचर करूचे एग्रीकल्चर सेक्टर रे, किंतु जो भित्तिभूमि जो दरकार किछि राज्य रे, मु कहूनी सबु राज्य रे, किछि राज्य रे से भित्तिभूमि एबे भी सुधा नाही। देखिबे गोटे चाषी को सेति कॉन्फिडेंस पाउनी से पनीपरिबा करबा पई, कहीं आपण एबे भी सुधा गोटे भारत भलिया गोटे कंट्री रे जेतेबेले बिलाती बैगनटे प्रोडक्शन हबो तार रेट जदि रहिबो 2 टंका, केतेबेले आपण ताऊ किनिबो 80 टंका रे। जदि यही भाया देखा जाए एटा कम्प्लीटली देखा गले सरकार रो गोटे विराट बड़ उत्तरदायित्व इथे रहउची जे आकु केमिति ई जो गैपटा को ह्रास करा जिवो। ए गैप रहिबा द्वारा कोन प्रॉब्लम होची, चाषी आत्महत्या बढ़ुची। चाषी लोन नहीं जदि कला से निश्चित रूपे आत्महत्या छड़ा कौन सी बाट नहीं, कारण सी जितेबले बिकिबो सेतेलकु 2 टंका, किंतु मुनाफाखोर को माने होचंती से जो कम रेट रे नहीं जाउछंती। विभिन्न राज्य जो मानके कोल्ड स्टोरेज अछि तांकर किछि मिडल मैन अछंती, सेमान ताकु नहीं जाउछंती। जो राज्य रे कोल्ड स्टोरेज रो अभाव देखा देछि, सेही राज्यर चाषी कहंतु से राज्यर खाउटी कहंतु, से माने बहु मात्रा रे प्रॉब्लम रे शिकार होछंती। एतिरे सरकार रो गोटे बड़ भूमिका रही। जदि आप आज डेट रे कहबे चाषी माने काई कोल्ड स्टोरेज करना, चाषी माने करिवे केमती कोल्ड स्टोरेज, चाषी मानक पाखरे पैसा कोड आसला कोल्ड स्टोरेज करिया पे। तेणु करी गोटे सभ्य राष्ट्र हिसाब रे जेतरे गोटे राजनीतिक गर्व करुछि जे मु, किंतु सेठी जानिबा दरकार जे सेठी से चाषी मानकु प्रकृत रे जस्टिस देई पारु नाही। एवं जो राज्य रे कोल्ड स्टोरेज करिसंती से मानकर शस्यर भंडार आनी रखी दउछंती, विभिन्न राज्य भी सही टाइम रे जो टाइम रे प्रोडक्शन होची सही टाइम रे आनी रखुचंती। तेणु वर्तमान देखिबार मुख्य जिंस अछि जे जो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा पई राजनाथ त्रिपाठी ए जो दिगो गुडी आपण कहले सिक्त त्रिपाठी ए दिगो गुडी को सरकार कहू ना, सरकार वैश्विक संकट को कहउचंती, सरकार मानसून को कहउचंती, कोठी कर्नाटक रे पानी पसी गला, महाराष्ट्र रे पानी पसी गला, आकु बेसी दायी करा जाउछि। किंतु ए जो दिगो गुडी को आपण कहले जो टेक्निकल दिगो गुडी को ताकु सरकार विशेष भाव रे एड्रेस करू नाहंती। विभिन्न सरकार माने देखो बहुत गुडा जिंस अछि, कम पानी रे केमिति आपण शस्य करिवे,
तापे जो बुंदा जलसेचन अच्छी अल्प पानी रे तेणु से भली टेक्नोलोजी आडप्ट करिया दरकार से भली इरिगेशन सिस्टम मध्य आडप्ट करिया दरकार एक दुई रे आपण जो कहले भल मंजी आज डेट रे प्रोडक्शन बढ़िया पई किंतु से मंजीटा जो दिया जाउची ताको एनश्योर के करइबो से मंजीटा क्वालिटी मंजी बहुत जगह आमे देखुचे जे भारत वर्ष रे किछि चासी से माने मंजी सठिक मंजी पाई परनाती ताको एनश्योर बहुत जगह से गजा उठुनी तेणु यही व्यवस्था देखा तेणु से गोटे क्वेश्चन उठी प्रकृत में सरकार मंजी जदि भल जोगे पारुनी से मॉनिटरी सपोर्ट दि जाऊ सी मंजी देखी किणवे तृतीय जिनस जो इनपुट दि जाऊँगी जहाँ भी इनपुट दि जाऊँगी से इनपुटा को एनश्योर करवा आपन कीटनाशक औषध कहतु सार कहतु ए सब जिनस गुड़ाक सरकारी स्तर में सठिक रूपे लोकों पाखे पहुँचुना ना नहीं तार उत्तरदायित्व रहा दरकार देखा सठिक रूपे पहुँचुनी आउ गोटे जिनस देखो जो मनसून आम देखुचे मनसून इश्यूज रही नो डाउट एल निनो ए सब जिनस रही तार किंतु प्रभाव को कमेवाई हेले आमको इरिगेशन सिस्टम डेभलप करिया पड़िबो किछि किछि राज्य रे देखियो इरिगेशन सिस्टम एबे सुधा पंजाब भलिया देखो छोटियो राज्य तार इरिगेशन होची तार पानी होची 2% वाटर सेठी तेणु सेही दिगरे अधिक गुरुत्व देबा आपण इरिगेशन फैसिलिटी हला किबा आपण चाषींकर आय को केमती बढ़ेबे से दिगरे केवल ट्रेडिशनल बा पारंपरिक मेथड यूज करे हबनी ता पई अत्याधुनिक ज्ञान कौशल मध्ये आवश्यकता रहिछि मु आसीबी डॉक्टर प्रदीप पंडा आपनका पाकू 2024-25 रे बे जो कथा अविनाश उल्लेख करथिले जे आमर दुईटी कथा गोटे है टैक्स रिफॉर्म्स एंड रिलीफ आउ गोटे कथा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितेबाला आपण कहउछंती 2047 विकसित भारत अमृत दुनिया सबू क्षेत्र में आम जितेबाला ग्लोबल कॉम्पिटिटर आमर जो मान रही सहित आम गोटे स्टेज को गले से टंकार मूल्य ह्रास पाउछि आमको वर्तमान समय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पाई कौन कौन आवश्यकता अच्छी एक दुई रे मध्यवित्त आप गोटे पटे कहते लोक टंका खर्च करूँ किंतु लोकों पाक टंका आसो केमती मध्यवित्त टंका से आपड़ भी इंटरेस्ट उपरे आप टैक्स नेले तेणु स्वाभाविक भाव में आजिका समय टैक्स रिफॉर्म्स केते आवश्यकता अच्छी निश्चित भाव देखो 2024-25 बजेट रे बहुत गुड़ा चैलेंजेस अच्छी आपड़ जदि इकोनॉमिक सर्वे लक्ष्य करेंगे से बहुत गुड़ा चैलेंज को बहुत सुंदर भाव में कराई कि आमर जो सिस्टम अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्टेबल नहीं ता फल कौन होची आमर इंटरनल प्रॉब्लम होची सेठी बहुत क्लियरली मेंशन कराई बैंकिंग रे डेट बढ़ी बढ़ी चलची और कॉर्पोरेट इंडेटनेस बढ़ी चलची जोटा गोटे भल इकोनॉमिक पे साइन नुआ ता सहित एफडीआई आमर आउटफ्लो होईची आमर लास्ट ईयर एफडीआई थिला $45 बिलियन 47 ରୁ 45 $2 बिलियन कमी ए सब हबार कारण होची आमर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जेते स्ट्रांग हबो आउ अफोर्डेबल हबो सही गुरा करबा आमर देखि वर्तमान देखिथिबे माइक्रोसॉफ्ट रो गोटे बग आसिला 8.5 मिलियन कंप्यूटर अफेक्ट गला माने आमे बहुत डिजिटल रे स्ट्रांग नुआ चाइना भाया कंट्री किसी आफेक्ट है रशिया भाया कंट्री किसी आफेक्ट है कारण से निजर सर्भर कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कर निजर सब सिस्टम अच्छी आमर किसी भी गोटे क्राइसिस हेले पूरा सिस्टमटा हली जाऊँगी से आम केमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करवा आउ गोटे सब बड़ा पॉइंट होचे साइबर सिक्योरिटी आप देखिए एनसीआरबी डाटा लास्ट ईयर कहूँ 24% क्राइम होती साइबर सिक्योरिटी माने आमे साइबर क्राइम धरी ही पारु नै प्रतिदिन आपण देखुतबा होची सेइडर द्वारा होची ता सहित हमर जो कंजप्शन को आस्तले निहाती बाबरे गत 10 वर्ष रे आपण देखिबे मिडिल क्लास पाई किछि कंजप्शन बूस्ट दियाइनी आपण इनकम टैक्स जो 3 लाख देला सही 3 लाख वर्तमान समस्ते कहउचंती 10 लाख पर्यंत भी एग्जेम्पशन करंतु कारण इंडियन इकोनॉमी 72% कंजप्शन ड्रिवेन इकोनॉमी आपने जिते मिडिल क्लास को पैसा देवे से कंजप्शन को आसो कंजप्शन हेल्ले मार्केट आसो मार्केट रु ग्रोथ आसो जेनेरली आम कहती कंजप्शन टा ग्रोथ बढ़ाए इन्वेस्टमेंट टिके कमाए जदि आप अदर सेक्टर को जमी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव रे पैसा देले सेटा आम देखी विगत दिन में प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव किसी फरक आम देखिलेनी से भाया किंतु आप कंज्यूमर को जो बूस्ट देवे से आपंकर जमी इनकम टैक्स रिलीफ देवे आम जो कहते आपंकर फिक्स्ड डिपोजिट कमी गला आप देखो आप मेडिक्लेम करेंगे तापर इंश्योरेंस बढ़ी जीएसटी दौरान मेडिक्लेम जीएसटी सबुठ बड़ कॉम्प्लिकेटेड अच्छी बर्तमान बेसिक गुड गुड़ा जीएसटी लगुच जोटा कि आम सिमेंट हो पानी हो जोड़ा आम
दरकार 18% जीएसटी केंदु पत्र लगुची एई सब जिंस जो गोटा जीएसटी सरकार अनुभव करते कि नहीं जेहेतु गोटे पटे मुद्रास्फीति बढ़ुची खर्च बढ़ी चली अन्यपटे जोटी मजूरी कहतु दरमा कहतु से भाव में आशानुरूप बढ़ी पार ना अन्यपटे जो जीएसटी फीएसटी बाबद भिन्न भिन्न बाटे लोकटे जीएसटी मैंने कर दौर किंतु ता हाथ में टंका रहा तो आपाई आप जमी कहते 10 लाख पर्यंत छाड़ कथा ना कौन सरकार ये निष्पत्ति नहीं पारती भावते आप प्रथम जिन हूँ गुड़ाए लूपहोल्स अच्छी जो गुड़ाक सिस्टम हटाया पड़ो कौन से गुड़ाक ना लोकों पाखे इनकम टाक सठिक रूपे दर्शापी आगु केते गुड़े पदक्षेप किंतु एबे पदक्षेप एमती निपे आप देखो मैक्सिमम पारालाल इकोनोमीटा कौ सेक्टर रोचे पारालाल इकोनोमीटा रोचे गोल्ड रे रियल इस्टेट रे ए सब क्षेत्र रोचे तेणु ए पारदर्शिता आने केते गुड़े आईन कानून जोटा रही जमती लैंड सीलिंग एक्ट है आपन देखिए सेटार प्रैक्टिकली एप्लिकेबल हो पारुनी तार कारण होची जो सॉफ्टवेयर गुड़ाक तैयारी होती से गोटे मानधाता अमल सॉफ्टवेयर से आपड़ जानीपारे कହାର लैंड केते होल्डिंग्स अच्छी तेणुक प्रॉपर वे देखापी पारालाल इकोनोमी टाक कमापी आपड़ जदि आधार लिंक कर दिया जाए लैंड है गोल्ड है बिल्डिंग है रियल इस्टेट है तेणु जो पारालाल इकोनोमीटा जो कटि कमिज आपणकर से देखाई आपंकर सिस्टम को आज 26S आसीगला AIS आसीगला TIS आसीगला जो रिफ्लेक्शन हो गोटे लोक ठकवाई बाट पाइबनी आपड़ देखिए मुंबई गोटे नारीमान पॉइंट गोटे जगह अच्छी से समस्त पाखे आप देखिए 100 कोटी टंकार से ओनर सब बसुँच किंतु केते टैक्स दौरान दैट इज ए क्वेश्चनेबल मैटर तेणु से जिन गुड़ाक कमे आड्रेस करने ये जो पारालाल इकोनोमी टाक कमे डिस्क्लोजर टाक धीरे 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 कम्प्लीटली लैंड बिल्डिंग गोल्ड एगुड़ा सब ट्रांसपेरेंसी नहीं ठीक अच्छे एवं एटा हवा द्वारा कौन हम आप जो कथा कहते जो टैक्स कलेक्शन बढ़ी आप एक्चुअली 10 लाख कौन आप जब 15 लाख जाए छाड़ करदे भी टैक्स कलेक्शन डबल हो जाए एटा मन रखु बहुत लोक भारत वर्ष एवं सुधा आम जो दर्शाऊे से जानवे बहुत गुड़े इनफर्मेशन अच्छी आम बर्तमान सुधा डिस्क्लोज हो पारुनी माने अल्प आय लोक टैक्स दउछंती बाध्य है कि किंतु जो माने अधिक आय करछंती आपण धरंतु आज गोटे छोट एग्जांपल देबी जदि आपण आज डेट रे मैक्सिमम लोक हुक पकई लाइन नेले तार इंपैक्ट निश्चिंत रूपे जो लोक साधारण लोक मनीषा मैडम को सर से प्रथम रिमार्क दिंतु मनीषा मैडम जो कथा समस्ते उल्लेख कले गोटे है जीएसटी कलेक्शन आप देखु 2 लाख कोटी टंका आप मे जब देखिए पूर्व आप देखिए एप्रिल मास देखु अर्थात आवश्यकता अधिक वर्तमान आप जीएसटी कलेक्शन कले 22-23 लाख कोटी टंका आप गोटे समय अर्थात टार्गेट रु यथेष्ट अधिक आप कले किंतु आजिका समय जो आवश्यकता कथा कह लोकों को रिफॉर्म करौना टैक्स रे कौन प्रकार बेनिफिट दौना जो कथा उभय त्रिपाठी और डॉक्टर पंडा उल्लेख कले जे जो मध्यवित्त भारतर सबुठु अधिक संख्यक लोक अच्छा जहाँ को नहीं देशर अर्थनीति से ही वर्गों आपण आशा करुँच कि एथर बजेट रे किछि आसीबो नहीं आमे देखुलु आपंकर आमे भावुलु जे साधारण लोकंकु दृष्टि रे रखिकी बजेट जमती से जीवन धारण मान उन्नति आसू सेटा पई होय तो सरकार चिंता करिवे आमे गत 10 वर्ष देखि सारिचु जे सरकार सेमती जेते बजेट भी करिसंती कोनोसी प्रकार साधारण लोकंकर जीवन धारण मान उन्नति आनी पारि नांती तो एथर आशा करतुलु 3.0 रे जदी सरकार हुए तो से विषय किछि चिंता करि पारंती किंतु लागुनी काहे आपनकर जहाँ भी आपनकर देखुछु आमे विभिन्न प्रकार एनालिसिस देखुछु कोनोसी प्रकार सरकार सेथरे आनिबा भली हमकु देखा जाउ नाही आपणकर जो मध्यवित्त कथा कहते आपणकर देशर आपणकर 31% होचंती मध्यवित्त श्रेणीर जो जो मैंने सैलरीड अच्छा से दरदाम जो भाया इनफ्लेशन बर्तमान बढ़ी चली जदिओ कहूँ दरमा बढ़ी किंतु से टैक्स स्लैब को चली आसिले तो से तो दरमा बढ़ी किसी लाभ होनी कि दरदाम वृद्धि शिकार से होती तो से कौन क्षेत्र में आम गोटे प्रकार रिलैक्सेशन दबारे असमर्थ होचु तापर आपण जोटा कहले जीएसटी कलेक्शन बढ़ी खाली जीएसटी कथा नहीं सरकार वर्तमान आपणकर कैश बैलेंस जोटा आपणकर सेटारे बढ़ी आपणकर आरबीआई डिविडेंड कथा जो देखा यही वर्ष आपणकर 2.11 लाख
आरबीआई डिविडेंड रो सरकार पाइचंती माने केते बड़ अमाउंट भाबंतु पाइचंती तापर आपनकर एफडीआई जोटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपण जेपी मॉर्गन बॉन्ड रो जदी रिपोर्ट देखिबे आपण सेथरे मध्ये सरकार को पाखक पैसा आसीची तापर आ गोटे रहिला टैक्स रेवेन्यू सेथरे तो पाखापाखि 4% रे सरकार अधिका आय पाइचंती 9.1 रु से बढ़ी के पाखापाखि 13.4% हे सारलानी तो सरकार जो आळ दउचंती जे आम पाखरे पैसा नाही आमे करि परिबोनी सेटा संपूर्ण भाबरे वर्तमान भूल भाबरे प्रमाणित हे सारची सरकार को पाखरे पैसा अछि किंतु मानसिकता नाही जे केमते साधारण लोकन को पई करि परिबे ये सरकार सब बेले आपनकर कॉर्पोरेट सरकार हे किंतु ता भितरे आज्ञा आपण देखिबे जे आपनकर चीनी हैला आपनकर चाउल हैला आपनकर अटा बा गहम जातीय सामग्री हैला किबा पियाज हैला ये चारोटी रप्तानी उपरे कटकणा लागिला आशा करागला जे एथर ये सब सामग्री उपरे रप्तानी कटकणा हुए तो हटई पारंती सरकार किंतु प्रोडक्शन जदि आपण देखिबे एई फाइनेंशियल ईयर रे बहुत आपनकर खराब भाव रे बहुत ह्रास पाइछि तो प्रोडक्शन बढ़ेबा पई कोन मेकानिज्म अछि आपण एमएसपी बढ़ौचंती कि आपण जेति की प्रॉमिस करथिले लोकन को भारतर सबुठु अधिक जो जो क्षेत्र चाष होछि तार एमएसपी तार जेति की कॉस्ट लागुछि से हिसाब रे बढ़िछि कि गतकाली आपनकर कांग्रेस पार्टी रे जो स्टेटमेंट बाहरितला जयराम रमेश जी जे हमर मीडिया हेड अछंती से पूरा ब्रीफ भाव रे एमएसपी को नेकी सेठी ब्रीफ करिसंती हमरो डिमांड थिला जे एमएसपी को गोटे लीगल स्टेटस दिया जाऊ बोली तो सरकार से दिगरे बजेट रे कोनोसी प्रकार जिनस आनिबा भलिया तो हमको देखा जाऊ नाही तापर सेकंड पार्ट थिला आपनकर जो स्वामीनाथन कमिटी रो रिपोर्ट अनुसार C2 + 50% जो 22 प्रकार क्रॉप रे आपनकर शस्य ऊपर जो एमएसपी बढ़ेबा कथा से ऊपर सरकार कोनोसी प्रकार पदक्षेप नउचंती कि नाही सेति मध्य रे मध्य हमको किछि देखा गला नाही आ गुटे आपनकर 2021 रे जेतले आपनकर कला कृषि आईन प्रत्याहार हैला सेतले सरकार कहितले गुटे कमिटी तयारी हबो जे लोन जो कृषक माने नैचंती ता ऊपर काम करबो आ एमएसपी रो ऊपर से तदारख करिवो से कमिटी तयारी हैला आपनकर 8 मास विलंब रे तयारी तो हैला तापर आपनकर 2 वर्ष बीती गला इंटरिम रिपोर्ट ते मध्य आसी पारिला नाही तेणु आपण जो रप्तानी कथा कहउचंती आमदानी बढ़िले तो आज्ञा रप्तानी हेई पारिबो तेणु सरकार जदि एमएसपी बढ़ेबे नाही शस्य मानक ऊपरे ताहले कृषकटिए तारो कॉस्ट को मिंट करिवो केमती से कोउटो पैसा आनिबो जे वर्तमान जो इन्फ्लेशन एग्रीकल्चर जिनस आपण देखंतु आपनकर सार कोहंतु कृषि जात जो आपनकर उपकरण अछि से सब जिनस देखंतु सबुथिरे हेवी जीएसटी मध्ये लागू होई कि रहिछि तो सरकार जदि कृषक मानक मूलरू मारण नीति करिवे तो सेमानकर उत्पादन बढ़िले तो रप्तानी रे आपण कटकणा करि परिबे रप्ता हमर आमदानी ही हेई पारु नाही यूपीए समय रे जदि आपनको नै जिबी सेते बेल को आपनकर धान आपनकर गहम रे 119% आ धान रे आपनकर 134% एमएसपी रे वृद्धि कराइतला एनडीए सरकार ता तुलना रे धान रे आपनकर 47% आपनकर सॉरी गहम रे 47% धान रे 50% वृद्धि करथिले किंतु वर्तमान इन्फ्लेशन आ एग्रीकल्चर जो सब कॉस्ट को मेंटेन करिया पई एटा सफिशिएंट की तेणु सरकार जदि आपण एनएसएस रिपोर्ट को जानतु नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट कहूची 58% माने फार्मर्स वर्तमान डेप्ट रे रहिचंती माने पाखापाखि देशर अधारु अधिक कृषक आपनकर वर्तमान लोन भार रे डूबी रहिचंती 2014 परटू 1 लाख कृषक आत्महत्या कर सारलेनी मोर देन किंतु सरकार को कहबा कथा जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर फील्ड जेति की होबा कथा ता गोटे डिमिनिशिंग वे रे रहिछि एवं जेति की कंट्रीब्यूशन जीडीपी रो वर्तमान रियल एस्टेट ठू आरंभ करी आपनकर टेक्सटाइल ये सब क्षेत्र अपेक्षा अधिक लोक सेठी निर्भरशील किंतु आज कृषकर आय द्विगुणित करबा पई तांको केमती लाभदायक आपण करै परिबे से क्षेत्र रे आम पाखरे विकल्प व्यवस्था कोन अछि देखो सरकार मानसिकता ही नहीं आप विकल्प व्यवस्था तो सर कहते विभिन्न प्रकार विकल्प व्यवस्था रही है आम टेक्नोलोजी वर्तमान उन्नत हो सारा तेणु से सब जिन को इम्प्लीमेंट कर सरकार से पदक्षेप नहीं कि सरकार वर्तमान से दिगरे कौन प्रकार तांकर नाही सी तो जो जिनसटा हम कहलु जे आपण लोन छाड़ कथा देखुना आपनकर जो जदि यूपीए सरकार 2008 रे आपनकर 72,000 कोटी टंका लोन आपनकर वेव करितला आपनकर जदि मने थिबो सेते महाराष्ट्र रो 54 लाख चासी यूपी रो 42 लाख हरियाणा रो 8.9 बिहार रो 17.6 लाख आ झारखंड रो आपनकर जदि कहबी 6.6 लाख चासी बेनिफिट सरकार से जिनस करू ना से जिनस रे ना आपण जो कथा कहले जे कृषि रो सेतिके बेले लोकन को डाइवर्ट करी हबो विशेष करी डाइवर्ट करिया पे गोटे एरिया होची सर्विस सेक्टर सेथरे गोटे मेजर रोल प्ले करिवो आपनकर टूरिज्म ता सहित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एवं ए क्षेत्र रे कोन होची ए क्षेत्र रे बेसी जाई परनादी एबे भी सुधा भारत वर्ष रे 45% लोक कृषि उपरे डिपेंड करछन्ती जोटार जीडीपी को शेयर कमी कमी चली एवं जदि सेही डाटा देखिबे चाइना रे 37% लोक डिपेंड करथिया बेले भारत वर्ष रे 45% लोक एबे भी सुधा कृषि उपरे डिपेंड करछन जोटा कि अमेरिका रे 1% लोक किंतु देखिबार अछि जे एबे भी सुधा भारत वर्ष रे 55% पाखापाखि लोक सर्विस सेक्टर को गला सत्वे मध्य
किंतु चाषी संख्या से जापर आम गोटे जदि टूरिज्म डाटा देखिए एशियान कंट्री भितर भारतर स्थान रहा 8-9 नंबर से विएतनाम भाया कंट्री आप देखिए छोट छोट कंट्री गुड़ाक जोड़ा सब अच्छी मालेशिया से सब ऊपर अच्छा सहित आम जो कहे ये ये माने थाईलैंड भाया कंट्री से बहु ऊपर अच्छा से तेणु से देखा पड़ो जे भारत वर्ष में टूरिज्म शिल्पर गोटे निहाती प्रगति दरकार दुई रे जो गुड़ाक अधिक मात्रा रे लोक निजुक्ति हो पारे विशेषकर फूड प्रोसेसिंग ता सहित से इन्वेस्टमेंट दरकार एवं आउ गोटे बड़ दिग जोटा रही मैन्युफैक्चरिंग रो एक्सपांशन आप देखो मैन्युफैक्चरिंग रे चाइना बर्तमान नंबर 1 जदि एशियन कंट्री भितर देखिए छोट छोट कंट्री ताइवान साउथ कोरिया एवं एमाने जो रेट रे मैन्युफैक्चरिंग रे अछंती भारतर कंपैरेटिवली दबदबा से भली नाही दो आमर एशिया रे सर्विस सेक्टर रे दबदबा भलो अछि किंतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे हमकु से दबदबा बढ़िया पड़ियो दो प्रचेष्टा चली किंतु केतुटा एरिया नजर रखुचंती वर्ष को गोटे नॉन फार्म सेक्टर रे 7-8 मिलियन रोटे जॉब क्रिएट करिया पई आपण देखुचंती कृषि क्षेत्र को छाड़ी की नहीं से जॉब क्रिएशन करिया को हेले आमको विभिन्न राज्य जो एक्चुअल सर्विस सेक्टर बढ़ी पारनी टूरिज्म सेक्टर बढ़ी पारनी से गोटे बड़ एम्फासिस दबार अच्छी एवं से जो जो ये दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार विशेषकर टूरिज्म केमती बढ़िबो आपण प्राइवेट कैपिटल को केमिति अट्रैक्ट करूछंती इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को केमती अट्रैक्ट करूछंती टूरिज्म सेक्टर को ता ऊपर डिपेंड करूछि केतेबेले सेमाने आसीबे आपण सेति गोटे परिवेश क्रिएट करबा को पड़िबो एवं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिया पड़िबो तार इंटरनेशनल इन्वेस्टर मन को डाकिकिना गोटे सम्मिलन करिया पड़िबो एवं केते गुडे एरिया आपण सेति लैंड बैंक क्रिएट करिया पड़िबो टूरिज्म लैंड बैंक स्पेसिफिकली एवं सेटा को अट्रैक्टिव करिया पड़िबो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन क्रिएट करिया पड़िबो तापर जाई अधिकरो अधिक लोक आसी परिबे जो डाटा कथा कहउतले एवं टूरिज्म शिल्प मध्ये बढ़िबो गत थर अर्थात यही जो फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर भारत को 9.3 मिलियन टूरिस्ट आछंती जोटी 25 मिलियन थाईलैंड को 28 मिलियन मालेशिया को 26 मिलियन कोड तळे अछि केते तळे हम बहुत एग्जैक्टली हमें आलोचना को आगु को मध्ये बढ़ेबा अविनाश समय होचे को छोटिया कमर्शियल ब्रेक रो दर्शक बंधु हमें खूब शीघ्र फेरुछि ए प्रसंग रे आलोचना आगु को भी जान Admission opens for +2 science, +3 science, MBA, MCA, ITI and Diploma Engineering in Ganesh Group of Institutions, Bhubaneswar and Chandigarh. आसो पीले आमे शिखिबा भाषा स्वाभिमानर आत्मनिर्भर हेबो भारत एकता हेबो अभिमानर आत्मनिर्भर हमे हाँ मु भी आत्मनिर्भर हेबी किंतु केमिति सबु मिले ए धर गर्भरु एते आशीर्वाद मिलुछि ए धरार कण कणरु प्रतिटी प्रयोजन अमर जेबे पूरा करि पारिबा आत्मनिर्भर भारतर आमे सेबे मूल दुआ पकाइबा आत्मनिर्भर कोण अमर धरार एही आशीर्वाद को आमे देश सेवा लागि करिबो अर्पण देशर आवश्यकता पाई आत्मनिर्भर भारत पाई वेदांता गिफ्ट सारा भारत वर्ष भितरे नाक A++ पाई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस भितरु जण हे पारिछि माने फ्यूचर एवं प्लेसमेंट पक्का गिफ्ट ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा सीमा तू +2 पर कोन करिवु BSc नर्सिंग और तू MRT तू BSc ऑप्टोमेट्री तू कोन करिवु BSc in medical laboratory technology रिया तू BSc in EMT तू BSc in anesthesia technology और तू BSc in ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कोन पढिबु मु तो बीपीटी पढ़िबी अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा और सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा I am a world skill champion. I am an automobile expert. We run startups. Industry 4.0 is here. I am a proud mariner. Welding is my passion. We are robotic engineers. Home away from home. CV Raman Global University, Odisha. Homegrown, world class. ए जीवन को किया भरोसा
आज अच्छी काली की नहीं बुढ़ाटा हेलुनी तोर तो बुद्धि सुद्धि नहीं घर को जा से नानी माँ डाकुथबे मु जीविनी गांधी भाई भाई ताकर कार मन मिजाज बोल नहीं मु जीविनी भगत विदुर साग भजा दे तो साई पारिला मोर सारा जगते लगाई अठा मो कालिया ठाकुर मिठा बासन थाई चंदन बन कुनिंदा भावन थाई भजन प्रभु कुनिंदा आखि बुझाकू लुह बुझा आखि बुझाकू लुह बुझा ओडिशा आम शाशु शशुर आसुनु कौन हूँ मधुआ सांग जेबे मिल जानती मोर नंगा खटीटे हुए कंपी जाए बाजार बंधु बांधव आसे तो मुंड कर मधुआ 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 बाहर को सो मो झुओ को एमिति कहलानी बाहर को बापा बो हेलो झुओ तमे घर को तमे घर को माछ पाई जाइथिलु माछ काई जोड़ीछा मद पी देकी रहिलु मंगलवार रात्रि 9:30 सह प्रायोजक गिफ्ट ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा ओम नमः शिवाय वर्षक भितरे 12 मास ए 12 मास भितरे श्रेष्ठ मास होची श्रावण काहेकि श्रेष्ठ मास श्रावण आउ ये श्रावण मास सहित प्रभु शंकरंकर की महात्म्य रही आसंतु एई समस्त वृत्तांत जानिबा आमर एई श्रावणी महात्म्य प्रत्येक दिन प्रातः 6:30 समय कालिया शांते हो सुनिमा हेउ गुहारी सकाळ प्रहरु तुमरी दुआरे डाकी डाकी गली सरी गोटिए करुणा कलणी मणिमा आउ गोटिए करुणा करिबा हेउ तुमर जगतळे जीवन जाऊ देखलो देखो कळमाणिक आसी नदी घोष चढ़ी रथरे गाड़ी गाड़ी देखंतु भक्ति और भावर भोजन कंठरे कालिया प्रतिदिन सकाळ 6टारे दर्शक बंधु स्वागत करुच्छे आपंक आउ किछि समय पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापन करेंगे तेबे ता पूर्व अंतरीण बजेट रे केउ क्षेत्र को केते आलोकेशन होता एवं कौन कौन स्वतंत्र दिग रही 2024 अंतरीण बजेट रे बा फेब्रुआरी 1 रे उपस्थापित बजेट रे ता उपरे नजर पकाइबा। ए क्षेत्र में प्रथम आसिबो रेलबाई क्षेत्र में 2024-25 अंतरीण बजेट रे 2.55 लाख कोटी टंका खर्च हेबा पई आकलन करा जायतिला एवं आपण तापर देखिबे जे 2023 बजेट ठारू सामान्य अधिक रहितिला। बजेट भाषण बेले 3टी नुआ रेल कॉरिडोर घोषणा करथिले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। शक्ति खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर बंदर जोगाजोग कॉरिडोर एवं हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर यह माध्यम रे केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र में विराट परिवर्तन आनिबा पई प्रयास करथिले। पीएम गतिशक्ति योजना अधीन रे एही कॉरिडोर कार्यक्षम हेबो। या सहित ट्रेन रो 40,000 बगी को वंदे भारत स्टैंडर्ड रो भी करा जिवो। रेल जोगाजोग रो आधुनिकीकरण
एवं रूपांतरीकरण कराजिबा पई मंत्री सेतबेले कहिथिले किंतु बजेट रे रेलबाई क्षेत्र में सेभली किछि बड़ धरणर घोषणा ए तीनोटी कॉरिडोर को छाड़देले ही नथिला। हाँ, वंदे भारत 40 लाख कंपार्टमेंट को 40,000 कंपार्टमेंट को वंदे भारत स्टैंडर्ड करबा पई सरकार सेतबेले निष्पत्ति नैथिले किंतु एबे भी सेफ्टी एवं सिक्यूरिटी रेलबाईर एक प्रमुख प्रसंग हो रही जो कवच को नहीं अनेक समय प्रश्न उठिला तो आउ केतबेले ट्रेन रो ट्राफिक जो रही से संपर्क में कथा उठी आउ सबुठु बड़ अवहेला ओडिशा प्रति करा जायथिबा मध्य अनेक समय अभियोग होछि कारण ओडिशा रु जेतिकी टंका राजस्व आदाय रेलबाई क्षेत्र में होछि सेही अनुसार ओडिशा रे तार आलोकेशन होनी वर्ष वर्ष धरी 9टी प्रकल्प पड़ी रही। ए प्रकल्प गुड़िक बांशपाणी टमक जखपुरा दोहरीकरण ये 1 नंबर प्रकल्प आप देखिए जहाँ दीर्घ वर्ष धरी चली संबलपुर तालचेर प्रकल्पर दोहरीकरण कारण ये प्रकल्प सबू वर्ष वर्ष धरी चली से भाव में करपड़ा बुढ़ापंक रेल प्रकल्प ये दीर्घ दिन हम पड़ रही। बुढ़ापंक सालेगांव रेल प्रकल्प ये कंप्लीट हो पारुनी एबे भी ओडिशार 5टी जिला को ट्रेन चलाचल संभवपर हो पारिनी। भद्रक निर्गुंडी रेल प्रकल्प ता भी अधारे अटकी एवं संबलपुर टिटलागढ़ दोहरीकरण से काम भी अटकी। खोर्धा बलांगीर ब्रॉडगेज प्रकल्प सेपरी तालचेर विमलागढ़ ब्रॉडगेज प्रकल्प एमाने एपर्यंत कार्यक्षम ही ना। बारंग खोर्धा तृतीय लाइन ये संभवपर हो पार नहीं। आ सबुठ बड़ कथा खोर्धा बलांगीर प्रकल्प को पाखापाखि 25 वर्ष होगा बसलानी काम सरी पार नहीं। 2021-22 ओडिशा 6,995 कोटी टंकार व्यवराध होता। 2022-23 ओडिशा को मिलता 9,734 कोटी टंका। 2023-24 ओडिशा को मिलता 10,012 कोटी टंका। आपन जो देखिए ये जो आलोकेशन थिला एथिरे वाल्टियर डिविजन रो किछि शेयर रहितला। या परे आपन देखिए जे कोन ओडिशार दाबी रहितला। आपन या पूर्वरु जो सरकार थिले से माने कोन दाबी करथिले एवं सामग्रिक भाव में ओडिशा केंद्र सरकार के पाखरे कोन दाबी रखिछि। 2023-24 रेल बजेट रे 8,400 कोटी टंकार दाबी करा जायतिला एवं 2023-24 पर आपन देखिए नुआ रेल लाइन पई कहा जायतिला, डबलिंग पई कहा जायतिला, थर्ड लाइन पई कहा जायतिला एवं फोर्थ लाइन मध्ये किछि स्टेशन पई कहा जायतिला। सेहीपरि भुवनेश्वर, पुरी, कटक, ब्रह्मपुर ये सब स्टेशन रो आधुनिकीकरण पई दाबी करा जायतिला। संबलपुर, राउरकेला, बालेश्वर ये स्टेशन गुड़िकर आधुनिकीकरण पई दाबी करा जायतिला। 4,500 कोटी टंकार दाबी रखा जायतिला ये 8टी स्टेशन रो आधुनिकीकरण पई जहाँ संभवतः एपर्यंत संभवपर है ना। नुआपड़ा बरगढ़ भाया पदमपुर पई 100 कोटी टंकार दाबी मध्य रखा जायतिला। गोपालपुर रेढ़ाखोल पई 200 कोटी टंकार मध्य दाबी रखा जायतिला। नुआपड़ा गुणुपुर पई 300 कोटी टंकार दाबी रखा जायतिला। सेहीपरि भाव में आपण देखिए पुरी कोणार्क पई 100 कोटी टंकार दाबी मध्य रखा जायतिला। अनेक गुड़िए नुआ प्रकल्प आ किछि एक्जिस्टिंग प्रकल्प जाजपुर केंझोर रोड भाया आरोडी पई 100 कोटी टंकार दाबी। तालचेर अनुगुल पई 100 कोटी टंकार दाबी। सेहीपरि भाव में खोर्धा बलांगीर रेलपथर 290 किलोमीटर सरी मात्र 90 किलोमीटर जो कथा उल्लेख करी। एवं एबे आसुन देखिबा ये सब दाबी करागला 23-24 रे मिलिथिला कोन ता उपरे मध्ये नजर पकाइबा कारण अनेक दाबी सत्वे ओडिशा दाबी करितिला 8,400 कोटी मिलिथिला 10,012 कोटी टंका। आपण जे देखिबे एथिरे 57टी स्टेशन रो आधुनिकीकरण 280 किलोमीटर रो नुआ रेलपथ। खोर्धा रोड बलांगीर रेलपथ पई 1599 कोटी टंका। तालचेर विमलागढ़ रेलपथ पई 300 कोटी टंका। अनुगुल सुकिंदा रेलपथ पई 200 कोटी टंका। जयपुर मालकानगिरी रेलपथ पई 115 कोटी टंका। गुरदासपुर पारादीप रेलपथ पई 50 कोटी टंका। नुआपड़ा गुणुपुर ब्रॉडगेज पई 50 कोटी टंका। भद्रक निर्गुंडी तृतीय लाइन पई 330 कोटी टंका एवं ये सबू रेलबाई क्षेत्र में एतिकी मिलिथिला। दर्शक बंधु आमे या परे देखिबा जे 2024-25 जो इंटरिम बा अंतरीण बजेट रे ओडिशा को एग्रीकल्चर क्षेत्र में कौन मिलिथिला एवं ए क्षेत्र में ओडिशा केते लाभवान होइछि। रेलबाई क्षेत्र में आपण देखुथिले वार्षिक हाराहारी कौन थिला किंतु कृषि एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिग। कृषिर विशेषकर आप जो देखिए अंतरीण बजेट रे कृषि को गुरुत्व देवाई पाखापाखि आपन जो देखिए 1,27,470 कोटी टंका थिलार मूल व्यवहार जो कृषि गवेषणा एवं शिक्षा उपरे फोकस थिला। कृषि ऋणर टार्गेट थिला 20 लाख कोटी टंका।
कृषि उद्योगी एग्री स्टार्टअप उपरे अधिक फोकस दे जाइथिला। सेहिपरि पीएम किसान सम्मान निधि पई 60,000 कोटी टंकार प्रावधान थिला एवं 11.8 कोटी चाषी उपकृत होइछंती। पीएम फसल बीमा योजना रे 4 कोटी चाषी को निरापत्ता ई नाम योजना रे 1361 मंडीर एकत्रीकरण अर्थात मार्केट सृष्टि, खाद्य निरापत्ता पई आत्मनिर्भरशील तैलबीज अभियान, चाष को सहनशील करने नानो डीएपी उपरे मध्य गुरुत्व दि जाए कारण यह एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय। ता सहित माछ चाष क्षेत्र में एकर पिछा 5 टन अधिक उत्पादन पई मध्य योजना रखा जाइथिला। ये कृषि बा एग्रीकल्चर एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय। देशर आम या पूर्व जो आलोचना करूँ से मूलतः आपन देखिए 40% रु अधिक वर्ग सर्विस सेक्टर को छाड़ले यही सेक्टर पर निर्भरशील। तेणु आमको किभली लाभजनक चाष व्यवस्था करिवार अछि बा लाभजनक कृषि उत्पादित सामग्रीर बिक्री बटा करिवार अछि जहाँ पे मार्केट सृष्टि करबा आजिका दिन में बड़ चैलेंज बा करिवार आवश्यकता रहउछि। शीतल भंडार करिवार आवश्यकता रहउछि, एमएसपी बढ़ाइबार आवश्यकता रहउछि, इनपुट सब्सिडी देवार आवश्यकता रहउछि, किसान समानक इंश्योरेंस करिवार क्रॉप इंश्योरेंस आवश्यकता रहउछि एवं सबु परे आमे जेतेबेले एफडीआई मोड को गलेनी सेतेबेले एग्रीकल्चर एफडीआई इन्वेस्टमेंट सहित आमर ओडिशा ठू आरंभ करी भारतर प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल रे तार उपयुक्त मूल्य रे केमति बिक्री हे परिबो ता पई गोटे टेक्नोलॉजी माध्यम रे व्यवहार करबा आवश्यकता रहउछि। तापरे आसीबा डिफेंस कह जाए शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा ई तीनोटी गोटे जनकल्याणकारी सरकार प्राथमिक बा सर्वाधो कर्तव्य जो एजुकेशन हेल्थ केयर और डिफेंस भारतर एक प्रमुख अंश। वर्षवारी प्रतिरक्षा बजेट आप देखिए प्रतिवर्ष देश में सामरिक व्ययबराद बढ़ी बढ़ी चलती। 2019-20 प्रतिरक्षा बजेट 4,31,011 कोटी टंका था। 2020-21 ये बजेट 4,61,378 कोटी टंका है। 2021-22 प्रतिरक्षा बजेट है 4,68,196 कोटी। 2022-23 है 5,25,166 कोटी टंका। 2023-24 है 5,93,538 कोटी टंका। 2024-25 अंतरीण बजेट रे आपणकर प्रतिरक्षा बजेट जहाँ था 6,21,541 कोटी टंका। आमे वर्तमान स्वदेशी ज्ञान कौशल रे अनेक गुड़िए निर्माण करने जाऊँगी। आमे डीआरडीओ को अधिक सशक्त कराउछंती एवं रिसर्च यूनिट पाई ता सहित भारत में अत्याधुनिक टेक्नोलोजी व्यवहार करी केमती आमे अधिकरू अधिक युद्धास्त्र प्रस्तुत करें पारिबा। एथिपाई हाल ठू आरंभ करी अन्यान्य आपणकर जो सब स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्माण करा जिबाकुवा कंपनी को मध्य प्रोत्साहन दिया जाय। जोथबाई 6,21,541 कोटी टंकार आपणकर डिफेंस बजेट भारत में पहुँचलानी एवं जीडीपी रो एक प्रमुख अंश बा पाखापाखि एक बड़ अंश आमे एई सेक्टर को दौरान जो आप देखिए प्रतिरक्षा बजेट प्रति वर्ष बढ़ुची एवं देशर सुरक्षा पाई राष्ट्र सुरक्षा पाई बजेट ये अधिक बढ़ी बढ़ी चली एथर बजेट 6,21,541 कोटी टंका पहुंची जहाँ अंतरीण बजेट रे आपणकर ओवरव्यू थिला केंद्र सरकार। तेबे एथिरे आउ कोन किछि परिवर्तन होउछि ना सरकार एथिरे नुआ किछि योगदान करुछंती एथर डिफेंस सेक्टर रे ए संपर्क रे देखिबार अछि। या पर आपण जदि आसीबा आउ एक बड़ सेक्टर ताहला रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट कोविड रे बा कोरोना काल रे सबुठ अधिक विपर्जय होइतिबा अधिक क्षति सहितिबा सेक्टर रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट 4-5 दिग रही। बजेट 2024-25 रे आपणकर जदि आप देखिए इकोनॉमी को पाखापाखि 7.3% कंट्रीब्यूशन जीडीपी रोचे रियल इस्टेट सेक्टर। तेणु रियल इस्टेट सेक्टर रे शहरी विकास और रोजगार वृद्धि यथेष्ट सहायक होता है। रियल इस्टेट पर सीमेंट स्टील अन्य मटेरियल लेबर ये सब क्षेत्र प्रभावित होती। तेणु सुलभ मूल्य बा अफोर्डेबल हाउसिंग केमती संभवपर हम आज ताहा भी चैलेंज एवं मेट्रो नॉन मेट्रो जो 45 लाख कैप थिला संभवतः आजिका दिन में ता वास्तविक हो ना। आजिका दिन में मेट्रो नॉन मेट्रो रे जो पूर्वर जो प्राइस था ता 1 कोटी रु अधिक है। तेणु अफोर्डेबल प्राइसिंग गोटे नुआ मानदंड भी सरकार बर्तमान आनिबार आवश्यकता रही। आज भी ता चैलेंज हो रही। कोरोना सबुठ अधिक प्रभावित होता ये सेक्टर धीरे धीरे सुधार आसी। घर किना बिका बढ़ी। देशर प्रमुख सहर में अधिक घर बिक्री होची किंतु सर्वे या भी कहूँ 76% रु अधिक घर यूज होना अर्थात ताकू इन्वेस्टमेंट पर्पज रे लोक किणुचंती एवं ता वर्ष तमाम खाली पड़ुची। अर्थात वृद्धि एवं स्थिरता बजेट रु ए क्षेत्र में अनेक आशा रही। रियल इस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टाटस प्रदान करने से दीर्घ दिन दाबी करुँच जहाँफल निवेश बढ़ी पार एवं बड़ बड़ कंपनी एप्रति आकृष्ट हो आसीपारे। घर चाहिदा वृद्धि यही दिगटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण 24 ख जो कहूँ गृह ऋण उपर आप जो सुध देउछन ता उपरे भी आपण टिकस
छाड़ करुँच से टिकस सीमा ताकू आपण जो रिहातीटा 2 लाख रखुच्च 5 लाख टंका को वृद्धि करूँ ये दाबी रही सेपरी निर्माणाधीन संपत्ति जीएसटी सीमा ह्रास दाबी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट उपर भी गोटे स्पष्टीकरण आसबार आवश्यकता रही सुलभ गृह निर्माण पर प्रोत्साहन राशि देवाक दाबी कर प्रकल्प को शीघ्र सारिबा एवं त्वरित हस्तांतर पाई सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था भी दाबी होइछि सेपरी डाटा सेंटर एवं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर डिजिटल भित्तिभूमि निर्माण को गुरुत्व दी जाउछि जेमति आम पूर्व मध्य उल्लेख करथुलु कारण डेवलपर एवं घर क्रेतांक हितरे कंचामाल मूल्य रे स्थिरतार यथेष्ट आवश्यकता रही कारण गोटे समय रड बढ़ुची सीमेंट बढ़ुची लेबर कॉस्ट बढ़ुची से अनुपात आपंकर इन्फ्रास्ट्रक्चर रस्ट बढ़ी बढ़ी चली तेणु बर्तमान रियल एस्टेट क्षेत्र गोटे बड़ कथा है जीएसटी सरलीकरण उभय पक्षर आप जीएसटी नौ रॉ मटेरियल कॉस्ट गोटे कन्स्टांट वैल्यू रहा दरकार एवं गोटे निर्दिष्ट भाव में आउ गोटे कथा है जे दर निर्धारण जहाँ पूर्व रही कारण मन इच्छा बर्तमान घर बिक्री होची तार जो रेट फिक्स करवा ताकू नहीं गोटे निर्दिष्ट नियमावली आसबार आवश्यकता रही सहयोगी अविनाश अच्छा आम सहित अतिथि मैंने स्टूडियो उपस्थित अच्छा अविनाश आपण पाखु जावा ए संपर्क में विशुद्ध भाव में चर्चा निश्चित अविनाश आप गुरुत्वपूर्ण बिंदु पर उल्लेख करते रेलवे ठूँ नहीं रियल इस्टेट पर्यंत किभली भाव में समस्त आशा रही से सेक्टर गुड़िकर वर्तमान समय आवश्यकता कौन मैं डॉक्टर प्रदीप पंडा आपण निकट को आसपा चाहिए यदि विशेष भाव में आप रियल इस्टेट क्षेत्र को देखिए आप अविनाश जमी कहते जीएसटी सरलीकरण कथा और निर्दिष्ट आक्टर कथा रेरा बेरा आईन आसी आप देखिए सहित कंचामाल कथा सेटा जो रॉ मटेरियल रेट रे देखिए गोटे आशातीत भाव में वृद्धि घटी ए सब दिगरे गोटे अफोर्डेबल हाउस भारतर लोकटे केमती स्वप्न देखिपर चिंता कर तो बड़ समस्या आप गोटे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आसे नीति आयोग से कहते 60% भारतीय पाखे ही पक्का घर अच्छी माने 40% भारतीय पाखे पक्का घर ना आप इमेजिन करंतु डिमांडटा केते ह्यूज तार हबार कारण होची हमर लैंड प्राइस स्काई रॉकेट करची ता सहित हमर जतिकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जेमति आमे कहउतिले सीमेंट रे आपण 18% जीएसटी गोटे लोकटे लैंड किनिबो हाई प्राइस देखि तापर सीमेंट आउ जो स्टील रे 18% जीएसटी ए जो रॉ मटेरियल रे एते परसेंट बेसिकली आपण जदि देखिबे रॉ मटेरियल आपण जदि अधिक परसेंट जीएसटी नहीं जिवे कास्केडिंग इंपैक्ट पड़ियो इन्फ्लेशन बढ़ी जिवो सेते पई सबले हम कहंती पेट्रोल गैस डीजल हो रॉ मटेरियल हो आको जीरो करंतु केमा कम रे रखंतु कारण रॉ मटेरियल जदि जीएसटी लगे देले पुणी तार कंस्ट्रक्शन रे प्राइस नौचंदी जेमती अविनाश कहतले डबल जीएसटी दउचंदी हमें रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी दउचु लैंड किने पे भी जीएसटी तो घर रजिस्ट्रेशन बहुत जिंस तो ता फल गोटे साधारण लोकटे घरटे किनी पारुनी तेणु अफोर्डेबल हाउसिंग दरकार अच्छी आउ रूराल हाउसिंग सब बहुत इंपोर्टेंट देखो केंद्र सरकार कहते 2022 सुधा समस्त मुंडे छत 2022 सुधा आम 25 आसिक पहुँचले से कहते 29 देवे से गोल पोस्ट सिफ्ट हो रूराल हाउसिंग रे भी लोक पाखे ना पीएम आवास योजना ओडिशा को नहीं ओडिशा तो पोर्टाल ही करलानी बर्तमान कौन करेंगे मुझे जाननी किंतु बहुत एमती रूरल हो कि अर्बन हो हाउसिंग रे दरकार से आम बजेट रे एक्सपेक्ट करवा अफोर्डेबल हाउसिंग कि अफोर्डेबल हाउसिंग आपन देखो बहुत गुड़ाए से बैंकिंग सेक्टर भी किसी करहब आप देखो आपण कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपन को सहज लोन मिल जाऊँगी गोटे होम लोन टे अप्लाई करते सहज मिलूनी आम देखुचे बैंकिंग सेक्टर से प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर रे आपण देखो एग्रीकल्चर लोन होगला कि होम लोन होगला कि एजुकेशन लोन होगला आपको बैंक को कहया पड़ो आपड़ ये अधिक लोन करेंगे कारण से नीड रोटी कपड़ा मकान आम कहते ना घरटा गोटे नीड 40% भारतीय पाखे पक्का घर ना आठू बड़ समस्या कौन आम तो सही आलोकेशन दरकार आम हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बजेट मैडम गोटे चित्र देखिए सर आम देखु राष्ट्रपति भवन में पहुंचती निर्मला सीतारमण और सहयोगी एवं पूरा अर्थ मंत्रालय टीम वर्तमान राष्ट्रपति निकट से पहुंचती आलोचना कि भाव में बजेट उपस्थापन हम और पूर्व वर्तमान समय से अर्थ मंत्रालय आसी राष्ट्रपति भवन में पहुंचती राष्ट्रपति मीठा खुआउं ये चित्र आम सीधा सड़क आपको देखुलू आम सहित मनीषा मैडम अच्छा मनीषा मैडम जितेबाला समस्त मुंड पर घर कथा उठे बहुत भाग लोक वंचित अच्छा पीएम आवास को लेकिन किभली भाव में चलला द्वंद्व किभली भाव में पोर्टाल खोलने को नहीं राजनीति है आप समस्ते देखिथे किंतु ए सब भितर ए पद्मटी घुंची घुंची जाउछि
देखो जमी मुझे प्रथम ही कहूली सरकार पाखे बर्तमान कैपिटल कौन सेमती बहुत बड़ असुविधा ना 4टी मेजर सेक्टर पाखक अर्थ आसूची तो जितेबाला आमर ग्रामांचल अधारू अधिक लोक आपणकर मुंड उपरे छात ना पीएम आवास योजना कथा कहूँ किंतु तापर से जगाई दि जा पारुना तो ये फेलियरटा कौ जगार रोचे से प्रति सरकार निजे से आइडेंटिफाई करने को चाहूना से जगार तेणु जिते पर्यंत आमर रूराल बेल्ट उन्नतीकरण हो न पार से पर्यंत आपणकर देश आगेबाटा बहुत मुस्किल हो जगार तेणु आम रूराल बेल्ट को केते मात्रा रे आमे देई पारिबु कौ जगार से उन्नतीकरण सरलीकृत भाव में करिपारिबो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पई ग्रामांचल रे रूराल बेल्ट रे कोन करिपारिबो सेति प्रति सरकार विभिन्न प्रकार योजना आनिबा दरकार तो से सरकार जो उदासीनता रही जाउची सेति पई ए सब जिंस रे आपनकर हिंड्रेंस तयारी किंतु राज्य को लेके आपण देखिले ओडिसा पई पोर्टल खोललानी कर्नाटक पई पोर्टल खोलला ए राजनीति मध्य मझरे देखिया को मिलला मागी थिले फनी महाबात्या पर एतिकी घर सेतिकी घर आसिला नाही एबे जाय मिली नाही आपनकर माने सेही जिंसटा हला आमे 2014 रे आपनकर बीजेपी रो मैनिफेस्टो देखिबे ओडिशा को स्वतंत्र राज्य पाया से माने देबे बोली कहिथिले आज जाय से जिंसटा उठैलानी काहे की से माने बिहार को ऑलरेडी मने कर दिछन तांकर कैटेगरी ना वर्तमान स्पेशल स्टेटस काहा को दिया जाय पारिबो नाही जति ओडिशा को तमे से आळो रे मने करदलो किंतु ओडिशा को तो तमे कहितलो ना नंबर 1 करिवो बोली डबल इंजन सरकार 5 वर्ष रे आमे ओडिशा को नंबर 1 स्टेज रे पहुंचेबो तेणु ओडिशा रो जदि तमे स्पेशल स्टेटस कैटेगरी दउ ना हो ता से अनुसार एटलिस्ट ताको तो डेवलपिंग रो जो गोटे ब्लूप्रिंट आसीबा कथा सी आसी जिबा उचित ना तेणु ए सब आपनकर वाक्य बाण थिला आगो को जे आपनकर 2004 रे आपण इंडिया साइनिंग आमे सुनिथिलु ना सेतरे जो 31% मध्यवित्त वर्ग जो थिले सेतरे 18% वोट एपट सेपट हेतिला सही समय रे सेति पई बीजेपी सरकार गोटे विपर्जय रे सम्मुखीन होइतिला एबे भी आपण देखंतो सरकार मेजॉरिटी रे आसी पारिले नाही एते जदी डेवलपमेंट करिथिले ताले कोएलिशन गवर्नमेंट रो सिचुएशन आसीला आपण जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उठौथिले ता भितर भी घर कथा आसीबो किंतु आपण को देखंतनी कि एथर गोटे बड़ कंपल्सन अछि जेहेतु जेडीयू टीडीपी गोटे बड़ भागीदारी रहिछि सरकार रे समाने मागुछंती स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नले अनुरूप भाव रे हमकु कोन फायदा दियंतु ओडिसा एठी बीजेडी मध्य लंबा समय धरि सरकार रहितला से मध्य केंद्र रे मागी आस्तुला तो ये गोटे बड़ फेडरल स्ट्रक्चर रे गोटे पुणी गोटे द्वंद्व तयारी हेबनी कि अन्य राज्य माने आकु नै कि अपील करिवे देखंतु ए सबका साथ सबका विकास थिला ना तेणु जदि वर्तमान आपणकर आंध्र को बा आपणकर जेडीयू नीतीश कुमार को संतुष्ट करने सरकार जदि एक्सट्रा किसी करुँच से जगह अन्य राज्य मान सहित जो गुड़ाक अण बीजेपी शासित राज्य से जगह पातरंतर जदि सरकार करने को चाहिए से तो आपणकर विकास कौ भाया हम से सबका साथ सबका विकास गोटे फंपा आवाज बोली से प्रमाणित आपण देखिथिले नॉर्थ वर्सेस साउथ कोटे तयारी हेतला साउथ रो स्टेट रो सब आसीथिले मुख्यमंत्री कहंतु मंत्री माने सेमाने मध्य विक्षोभ करथिले आपणकर आंध्र वर्तमान डिमांड करूची आमे जदि तुमको समर्थन देछु 1 लाख कोटी आमको दरकार तेणु से आंध्र प्रति निहाती लिनिएंट मनोभाव कोटी ना कोटी करेंगे कारण यही सरकार आंध्र आपणकर नीतीश आपणकर चंद्रबाबू नायडू यही दी जनकर ऊपर ही यही सरकार तार दीटा चक से चलाउछंती तेणु सेमानक पई तो निहाती किछिटा पक्षपातिता सरकार को उपाय करिया को चेष्टा करिवे किंतु जोटा आपणकर माने अन्य राज्य प्रति सेटा पक्षपातिता निश्चित भाव में करबो जदि ओडिशा सरकार को तमे माने संपूर्ण भाव में कहितले ओडिशा पई विकास रो तमे सब द्वार खोली दबो ताको 1 नंबर करिवो इवन आसाम रो मुख्यमंत्री आसी ओडिशा को 1 नंबर करिवे बोली कहितले तो सेही भलिया स्टेटमेंट मध्ये हमें देखिया को पाई राजनारायण सर अछंती राजनारायण सर जो जदि आपण देखिबे नीति आयोग जदि कहिला जे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलिबोनी विकल्प कौन देखुचन समाने कहउचन रिवोल्यूशन ऑफ फंड रे यथेष्ट अर्थ मिलुची भिन्न भिन्न राज्य को ता भितरे आंध्र दाबी करूची ओडिशा दाबी करूची बिहार दाबी करूची हां विकल्प कौन करा जाय पारे स्पेशल गोटे फंड अलोकेट करा जाय पारे ए राज्य मानको तेणु जोटा हमें पैकेज कहूचे सेथिरे देखिबे जदि देखिबा ओडिशा भलिया राज्य पे आपण देखिए ओडिशा को को रिलेटेड करले आपण बेटर माने फंडिंग करि पारे ओडिशा होची कोल रे बहुत माने राज्य को एक्सपोर्ट करूची आपण जदि कहबे कोल रिलेटेड आपण कोल रॉयल्टी बढ़ी परिबे सेटा गोटे गोटे जिंस मन रखंदो मु खाली एठी गोटे उदाहरण देई पारे आपण चक्रधरपुर डिवीजन रे गला वर्ष केवल फ्रेट रेवेन्यू ओडिशा माने ओडिशा देइछि केते जानि छथि प्राय पाखापाखि 7000 कोटी रु ऊर्ध्व 7000 कोटी रु ऊर्ध्व ओडिसा रो तीनोटी जिला देइछंती गोटे होची केन्दुझर गोटे हूँ सुंदरगढ़ आउ गोटे हूँ एक्चुअल झारसुगुड़ा ये 3टा जिलूर 7000 कोटी रु ऊर्ध्व दि जाए चक्रधरपुर डिवीजन बाकी जदि कहे ईस्ट कोस्ट डिवीजन गला वर्ष अविभक्त ढेंकानाल केवल जाइए फ्रेट रेवेन्यू
5000 कोटी ऊर्ध पाखापाखि 5500 कोटी तेणु आम यही जिनस कहवा दरकार जे ये जो आम स्पेशल कैटेगरी स्टेट सहित डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक माने फटोचित्र नहीं देखा दरकार जे यही हूँ केउंझर अवस्था देखो केउंझर जाजपुर पटू एनएच जाइए रेलवे लाइन जाइए आमको स्पेशल पैकेज दि जाऊ कंकड़ाहाड़ आउ सेपटे केउंझर सेपट को पैकेज कारण ये जो आदिवासी एरिया को आपण गोटे स्पेशली रोड पे रेलवे पे स्पेशल आलोकेशन दि जाऊ ये जदि स्पेशल कैटेगरी आमको न दि जाए हमको आदिवासी ट्राइबल एरिया लोकों को सर आपण देखले बीआरजे फंड कटिगला आपण जानिथिबे एवं परवर्ती समय भिन्न भिन्न बाटरे फंड कटा हैछि आपण कोठी 70-30 थिला कोठी 90-10 थिला से 50-50 ऑलमोस्ट हे गलानी 50-50 ऑलमोस्ट हे गलानी वर्तमान समय एवं परवर्ती समय ओडिसा मागुतला डिजास्टर रेजिलियंस भित्तिभूमि पय हमको अर्थ दियो ताकू भी देले नै कोस्टल हाईवे देले रहिला नहीं ये निश्चित रूपे वर्तमान आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट होची भारत वर्ष एनएचआई रे ओडिसा रे कोटी ना कोटी जो हिसाब रे हबा कथा ही पारनी हमर बहुत गुडे बाकी अछि कोस्टल हाईवे बाकी अछि पेंडिंग अछि वर्तमान सुधा एडा में बहुत वर्ष धरि सुनुछु स्टेट कैपिटल रीजन रिंग रोड जोटा आपण देखिए एपटे आपनकर एक्चुअल रामेश्वर ठू आरंभ करी कटक टांगी जाए एई जो भुवनेश्वर कटक भुवनेश्वर एक्चुअल बाईपास रोड जोटा आम कहे स्टेट कैपिटल रीजन रिंग रोड ये यार प्रोग्रेस हो पारनी तेणु बहुत गुड़ाए किंतु आप देखिए केवल महाराष्ट्र गोटे गोटे रोड कंस्ट्रक्शन होची जोटा 17,000-18,000 कोटी टंकार कंस्ट्रक्शन होची बड़ बड़ ब्रिज होची ये सब होची तेणु कोठी ना कोठी देखा जाउची जे ओडिशा को जो आमे नंबर 1 करिया पे केवल चिंता करूचे ताको कोठी ना कोठी इंप्लीमेंट करिया पे स्पेशल फंड दरकार आपण मु जो कथा कहतली ट्राइबल एरिया पे स्पेसिफिकली एजुकेशन आप जदि आज केवल खाली कोटा टे करदे आप देखिए से एरिया डेभलप होनी कोटा तो बहुत आगुरी अच्छी कोटा द्वारा किसी हेनी आप पॉलिटिकली कोटा करती एजुकेशन रे कोटा करती कोटा द्वारा जी प्रोग्रेस हवा कथा बहुत कम प्रोग्रेस होती आप कौन दरकार जमी कहले नगड़ा को कहीं जाती आगुरी तार कारण हूँ से गुड़ा किसी ना कम्युनिकेशन जावाई सेमती बहु नगड़ा आप देखिए केउंझर कंकड़ाहाड़ सेपट बेल्ट गुड़ाक बहु परिमाण अच्छी आज सेंट्रल ओडिशा को कोस्टल ओडिशा लोक जीवाक नाराज करनी कम्युनिकेशन भल नहीं तेणु से देखा दरकार आमर साउथ रु एपटे आप जदि कहे एपटे मालकानगिरी सीधा एक्चुअल बारिपदा मयूरभंज सीधा रोड थ्रो सेंट्रल स्टेट्स सेमती आप कोस्टल रु सेपट को आप बहुत गुड़ाए अच्छी जो एनएच है रेलवे लाइन है ये गुड़ाक गुड़ाए आलोकेशन करी आप गोटे स्पेशल पैकेज दी पारे हाँ आप कौन से गोटे अमाउंट अनाउंस करेंगे आज भी अभी तेजी गति से जो बढ़ने वाले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है और हमारा ग्रोथ भी जो अच्छा है उसके लिए पूरक जो होगा वैसा ही बजट रहेगा और ये विश्व में जो हम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे भी बढ़ेगा। सर एक चिंता इन्फ्लेशन को लेकर के प्रतिक्रिया ये केन्द्र रु सीधासलख भाव में कारण पार्लियामेंट को सांसद माने मंत्री माने आगमन है निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंचले कि समय तले से राष्ट्रपति भवन जाते राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात कले निर्मला सीतारमण सहित राष्ट्रमंत्री और अन्य फाइनेंस डिपार्टमेंट अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने एवं जो गोटे पारंपरिक रीति रही परंपरा रही जेकोसी शुभ काम पूर्व आपण मिठा खुआती से जो परंपरा रही अनुपालन करुले राष्ट्रपति आ किसी समय पर अर्थात 11टा बेले आज बजेट उपस्थापन करेंगे सहयोगी सत्यजित अच्छा आम सहित सत्यजित आज बजेट उपस्थापन हो बहु प्रतीक्षित बजेट यही दृष्टि कारण सरकार विजन कौन रहिबो तृतीय थर पर देशवासी जितेबाला गोटे सरकार को गठन करने आस्था देइछंती ये मेंटर सरकार एनडीए सरकार जो थे नीतीश एवं नायडू भी अच्छा 2024-25 कौन बड़ चैलेंज रोची सरकार सामने रे एथर बजेट रे कौन फोकस रहिबो साधारण लोकों प्रतिक्रिया कौन आप बर्तमान कोठी अछंती एवं ए संपर्क रे लोक कौन आशा रखुछंती देखो मुझे भुवनेश्वर जयदेव भवन चा स्टल रही किसी बुद्धिजीवी रही साधारण लोक रही चाय पीछे से सहित आलोचना करवा कि बड़ कथा जमी आप कहते कि तृतीय थर रे मोदी सरकार पाड़ी पड़ी किंतु प्रथम थर एथर बजेट उपस्थापन कर प्रथम बजेट तृतीय पाड़ी प्रथम बजेट उपस्थापन कर सारा देश लोक मैंने चाह रही से मुहूर्त को बजेट रे एथर लोक कौन रही लोक कौन फायदा मिल
साधारण लोकटी से केते उपकृत हम कारण अनेक समस्या रही सारा देश में आपण पनीपरिया पाखु आरंभ करी तेल पाखु आरंभ करी गैस चूल्हा पर्यंत सबुटी रेट आकाश छुआ होता बेले साधारण लोकटी चाह रही कि जिते मोदी सरकार बजेट उपस्थापन करा निर्मला सीतारमण एमती क्यों भली बजेट उपस्थापन करेंगे तो साधारण लोक सुहाइब तेणु चाह स्टल चाह पीउथुवा किसी लोक आलोचना करा वरिष्ठ सांबादिक मान अच्छा बुद्धिजीवी मान अच्छा सर जिते आपण मैंने आशावादी अच्छा आज बजेट उपस्थापन कर निर्मला सीतारमण आप केते आशावादी अच्छा क्यों भली बजेट आपण मैंने चाहते शुणु ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तृतीय पाळीर प्रथम वर्ष प्रथम बजेट जो बजेट रे भारत वर्ष सब लोक गोटे उत्कंठार से अपेक्षा करिसेंती ये किभली जनकल्याणकारी बजेट हम ना नहीं साधारण लोक छुईब ना नहीं एठी कोटिपति लोक भी आम देखुचु कोटिपति लोक देखुचु तेणु टे चाटा पिऊँ किंतु गोटे कथा हूँ आम ये 5 टंकिया चा छता तले वर्षा बेले अपेक्षा करूँ जे बजेटा कौन हम आमर भी ये चा कटे विचार चली केते आम ये 5 टंकिया आहार जुहार सरकार को जुहार करुचु से 5000 कोटी टंका खर्च करुच्ची के आम अंबानी ता पुओ बाहर रे तो ये भारत वर्ष विचित्र भारत वर्ष ये टैक्स दौथुआ लोक अच्छा टैक्स चलुवा लोक अच्छा 5 टंकिया आहार खाई लोक अच्छा 5000 कोटी खर्च करा लोक अच्छा तो भारत साधारण लोकटी जी आलोचना करवा कि साधारण देखो आज परिवा रेट आकाश छुआ आपंकर गैस चूल्हा गैस आकाश छुआ पेट्रोल आकाश छुआ सबू क्षेत्र में बढ़ी आप सुना भी आकाश छुआ रही गोटे साधारण लोकटी झील बाहर कले आकाश छुआ सुना से सुना किणव कौन बाहर कर कौन तेना सबू क्षेत्र गोटे साधारण लोक कौन चाहूँ साधारण लोक देख बर्तमान साधारण लोकटे जो सीमित आय भितर चलवा भारी कष्ट कारण समस्ते सरकारी योजन उपकृत नुहति ए धर आम भुवनेश्वर रोचा लोकटे घर भड़ा दवा पब्लिक स्कूल पाठ पढ़ेवा एवं परिवार चलेवा परियापत्र तो जो भाई आकाश छुआ हो छुई होनी माने बैग रे टंका नुचु पकेट रे परिवा आनला भाई अवस्था होती जहाँ को छुईले सब 100 तो उन्नत मानर परिवा 200 आपड़ कौन करेंगे जहाँ तेल लुण जहाँ डाली जहाँ को छुईबे माने अछुआ दर माने आकाश छुआ दर तेणुक आ भितर बजेट किभली जनकल्याणकारी योजना हम गरीब लोक को सुहाइब एवं टैक्स जो मैंने दौरान से मैंने केते दूर या द्वारा संतुष्ट हे ये गोटे संतुलन बजेट हेले एवं जनकल्याणकारी जदि बजेट टी हम ताले भारत वर्षर गरीब ठारू कोटिपति ठारू कोटिपति पहुंच जाए समस्त लगातार सप्तम थर पर जो निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करेंगे तेज आप कौन भावुं कौन आशावादी अच्छा आज्ञा देखु प्रकृत में आम स्वाधीन भारत वर्ष में जो मैंने क्षमता को आसुँच आम ताकू साधारण लोक आशा कर गोटे जनमंगल सरकार आसिले लोकों काम करेंगे किंतु 1938 मसीह देश स्वाधीन पूर्वर आमर चारण कवि ओडिशार बांछानिधि कही धड़ा बदल रे कला हेले जोक मेंटिब कि कोटी गरीबों दुख चाषी मूलियार रकत निगाड़ी दिल्ली दरबार गढ़ कि आमे केते जन जीवन को पानी छड़ाई नदेले चलो कि अर्थात से कही जे यही स्वाधीनता प्रकृत स्वाधीनता नुहे ये साधारण मनीषर स्वाधीनता नुहे ये धला जोक हाथ शोषणकारी हाथरू कला जोक हाथ को शासन आसूची ये धला रक्त शोषणकारी हाथ को कला रक्त शोषणकारी हाथ को क्षमता आसूची तेणु यह आम उपलब्धि करुचु बारंबार जे आज यही पंक्ति आज भी प्रणिधान योग्य भावुं कारण सब दर आकाश छुआ रही आज्ञा शुणु आम भाई जो कहले जे 5000 कोटी जने खर्च कर भारत वर्ष स्वाधीनतार एत वर्ष पर आमर गोटे आईन प्रणयन हो पारना जे बे केते आमे खर्च करवा नंबर 2 है बर्तमान आमे भावुचु साधारण मनीष काशी मूलिया गरीब खटिकिया एमाने जो जीवन संघर्ष करुचंती कहीं दरदाम बढ़ुची एमाने पुंजीपति मान निर्वाचन रे हजार हजार कोटी टंका बड़ बड़ धनी लोकों चांदा नहीं तांको सपक्ष से माने आईन की प्रणयन करचंती तेणु साधारण मनुष्य को पेट को चाहिबा निहाती दरकार तबे आउ किछि बुद्धिजीवी अछंती जो माने बसी वर्षा जेतु झिपी झिपी होउची ता बिदा चाहार मजा भी उठाउचंती तबे सर जेतो किछि बुद्धिजीवी माने वरिष्ठ सांबादिक माने कहउतिले कि साधारण गरीब खटिकिया लोकों को पेट को पचरा जाउ नाही ए पचरा जान ताला आहुरी गोटे पूर्णांग बजेट हेई पारंता हाँ निहाती गोटे पूर्णांग बजेट हो पारंता भल हाँ किंतु इमाने गवर्नमेंट से जिन चिंता करें आज पर्यटन कि चिंता आइडियोलोजी ना से जिन जदि यहाँ जब बसिक एकाठी कम करते डिपार्टमेंट बसिक बहुत किसी हो पारंता
ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ବଜେଟ୍ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବେ ମାନେ ଯଦି ମିଡିୟମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର लो कैटेगोरी लोक हवा दरकार हाई तो हाई रही चलती ठीक चलती किसी असुविधा ना चाकरिया ठीक चलती किसी प्रोब्लेम ना कि मेन हूँ लो मिडिल क्लास मिडिल क्लास निहाती किसी दवा दरकार जो तो माने तल स्तर जो माने गरीब अच्छा निष्पेष से बजेट होना बोली ठीक होना ना होनी कहीं भी होनी कहीं ना सब स्कीम ही किसी असुविधा ना ना इनकम टैक्स आसुंच स्लाब आसुन ना कौन आसुँच किसी प्रोब्लेम हबार चांस ना से तो गवर्नमेंट सब जिन पाई जाऊँगी केमती बजेट आप चाहूँगी एथर सरकार जो सप्तम थर बजेट उपस्थापन नहीं ये जो बजेट सब बेले होउची समस्ते आशावादी जे केमिति मध्यवित्त किछि हबो आइदर इनकम टैक्स किंबा जोथ्रु हो किंतु मध्यवित्त सब बेले सफर रहउचंती मध्यवित्त गोष्ठी केतेबेले भी मध्यवित्त गोष्ठी कौन सुविधा नहीं सेकेंड होउची जो माने तल स्तर जो माने चाकरी करिसंती किंबा अवसर नैचंती एवं निम्न चाकरी मध्यवित्त चाकरी सेमानकर जो मानकर हेल्थ कार्ड नाही स्वास्थ्य सुविधा से टोटाल पाउ नांती एवं सेमानक पई कोनोसी स्कीम आसु नै जो थरे माने सेमाने उपकृत हेबे सेमाने बहुत सफरर माने जदि गोटे गरीब लोक गोटे विजु स्वास्थ्य योजना ये योजना अच्छी जड़े निम्न चाकरी किंबा मध्यवित्त चाकरी से हेल्थ कार्ड नहीं से संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पाऊना वर्तमान बजेट जिते पारित होची सारा देश में गोटे उत्कंठार माहौल रही कि क्यों भाई बजेट एथर पारित हम और क्यों क्यों सुविधा एथर साधारण लोक पाइबे लाइन से उठेली सेटा हला जे कोटिपति रु कुटीरपति 5 टंकार आहार 5000 कोटी बाहागर अर्थात भारत गोटे एभली देश जोठी आमे अनेक समय देखंती जे ये गोटे केवल जाति धर्म वर्ण निर्विशेष नुहे बरं आर्थिक असमानता क्षेत्र में गति करुथिबा देशर अन्यतम सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र अनेक गुड़िए दिग संपर्क में ये लोकंकर बा साधारण व्यक्तिर जितेबाला चिंता रहुची स्वाभाविक भाव में सरकार भी ए दिगरे चिंता कर आवश्यकता रही और सबु क्षेत्र में जे केवल आईन तार माध्यम समाधान हे से कथा नुहे किंतु समस्त मध्य गोटे सुषम बंटन केमती हो पार ता भी यथेष्ट गुरुत्व देवार आवश्यकता रही अनेक अनेक धन्यवाद सत्य आपणकर विस्तृत सूचना सत्यजित सेन थे आम सहित विस्तृत भाव सहित अधिक आलोचना करते मुझे डॉक्टर प्रदीप पण्डा आपण पाखु एमएसएमई गोटे सेक्टर जी सब बेले लास्ट 10 इयर्स रे सबुठ अधिक नेग्लेक्टेड होता सेक्टर बोली उल्लेख करा जाए आमे जितेबाला मध्यम क्षुद्र अणुशिल्प कथा उल्लेख करती आंसिलरी इंडस्ट्री कथा कहती जो कॉर्पोरेट माने आज सेमानंकर टर्नओवर आज बिलियंस रे होची सेमानंक पाई जो संस्था बंचिबा कथा आमे तांकु सब्सिडी केते दोछु तांको पाई क्रेडिट गारंटी केते दोछु तांको पाई आमे सेमती सपोर्ट कोन दोछु एमएसएमई सेक्टर पाई आजिका दिन रे बड़ आह्वान नुहे कि सरकार सेठी भी आपण अधिक रु अधिक निवेश करांतु अधिक रु अधिक लोकों को सेठी डाकंतु एमएसएमई सेक्टर कथा आपण कोन निश्चित भाव देखो एमएसएमई सेक्टर विगत 10 वर्ष मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर आपण देखंतु मीडियम एमएसएमई सेक्टरटा गोटे इंडियन इकोनॉमी रा बैकबोन कहते 30% रु अधिक जीएसटी जीडीपी कंट्रीब्यूट करे आ हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट दउथिला किंतु आपणकर जो नीति आसिला 2014 पर आप देखो एमएसएमई सेक्टर कमर भांगिदेले फास्ट आसिला डिमोनेटाइजेशन संपूर्ण अवस्था जीएसटी जो लगिगला एमएसएमई सेक्टर कंप्लीटली नष्ट होगला आमर जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आम देखुचु सब कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेट होची आमर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव रे कोटी कोटी टंका दिया दैट इज ओनली टू कॉर्पोरेट सेक्टर एमएसएमई सेक्टर पे कैश इंसेंटिव बिल्कुल दिया जाउनी ता सहित एमएसएमई सेक्टर जो प्रोडक्ट्स आसुची ताको गवर्नमेंट गोटे आमर रूल थाए एमएसएमई सेक्टर मान जो मैंने प्रोडक्शन कर 10 रु 15% गवर्नमेंट प्रोक्योर करवा दुखर विषय गोटे आसीला रिपोर्ट गवर्नमेंट मात्र 3% प्रोक्योर करदी गवर्नमेंट रूल करी भांगब ताले आपण कौन कहे 10 रु 15% प्रोडक्ट नवा कथा गवर्नमेंट एजेंसीज मात्र 3% नौ सहित आपण बहुत गुड़ा सेक्टर रे एफडीआई जो आनी दौरान एफडीआई आणतु किंतु कौन होची सेटा एमएसएमई सेक्टर को बहुत कंपटीशन दौची एमएसएमई सेक्टर को गोटे प्रोत्साहन दबा दरकार आपण ताको कैश इंसेंटिव देवे क्रेडिट नेले ऑलरेडी से माने लॉस रे अछंती ताकर प्रोडक्ट सेल होनी प्रोडक्शन करी कि से माने बसी चंती कैश इंसेंटिव पर्टिकुलर सेक्टर रे आपण जदी देबे ता सहित गवर्नमेंट प्रोत्साहन दरकार ताको हमरा कहबे 10 to 15% जो प्रोक्योर करिया था सेटा कंपलसरी हबो ता सहित आपण
एमएसएमई सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रे लोन देबे वर्तमान आपण गोटे छोटिया एंटरप्रेन्योर जे बैंक रे जीव ताको लोन मिलुनी बिग कॉर्पोरेट हाउस में कोटी कोटी टंका मिलुची दैट इज द प्रॉब्लम से आमे जेतबेले भी बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहबा एजुकेशन लोन हो एमएसएमई लोन हो एग्रीकल्चर लोन एगुरा जदि आम प्रोवाइड करबा ता सहित मार्केटिंग माने आमे मार्केटिंग पई भी किछि भाबुने केमिति एमएसएमई प्रोडक्ट आमे ग्लोबल लेवल ले सर आपन को लागे कि जेतबेले आमे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हेछि डिजिटल एरा को आसी छंती जोठी 5 जण लोक काम करथले सेठी गोटे मशीन काम कर दोछि आ द्वारा भी विशेष भाव रे क्षतिग्रस्त होछि कि सर चर्चा करिबा हम सहित कटक रु अजय दास जुड़ी होचंती हम प्रतिनिधि अजय कटक कोन कहूछि कटक रो आशा कोन आजिर ए बजेट को लेकिन सेठिकार साधारण जनता कौन कहते अविनाश निश्चित भाव में केंद्रीय बजेट जितेबाला आसूची आशा आशंका भितर साधारण बुद्धिजीवी जदि कटक कथा मु कहि मो सहित वरिष्ठ जो मैंने बुद्धिजीवी अच्छा युव वर्गर जड़े दुई जन अच्छा सहित सीधा आलोचना करवा सर जितेबाला बजेट आसे आशा आशंका भितर समस्ते रुहति आपनकर प्रतिक्रिया कौन हम आउ घंटे 2 घंटा भितर कौन आशा कर देखो यहाँ इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट आसी जाइए किंतु आम सेमती किसी आशा यही सरकार पाखर कर कारण यहाँ गोटे गतानुगतिक बजेट ही हम आप देखो आज दिन में दरदाम जो भाव में आकाश छुआ भाव में बढ़ी साधारण लोकंर माने बंचार जो राह ताहा मौली जाउछि बेकार युवकटी आज भारत वर्ष रे अधिकांश जन होचंती बेकार युवक सेमानक पई कोनोसी नियुक्तिर व्यवस्था आज पर्यंत करा जाई पारलानी दरदाम क्षेत्र में जदि पेट्रोल डीजेल को जीएसटी दायरा भितर निया जाता ताहले अनेक परिमाण रे पेट्रोल डीजेल दरदाम कमंता एवं फल रे दरदाम टेके ब्रेक हो पारंता ता मध्य आमे आशा रखिनो एई सरकार पाखरे किंतु एई आशा करिबा निहाती दरकार कारण दरदामटा निहाती कमेवा दरकार अनएम्प्लॉयमेंट युवक मान को चाकरी देवार व्यवस्था सरकार निश्चित करवा दरकार आपन देखो तार केते बड़ प्रभाव पड़ुछि आपन ट्रेन दुर्घटना प्रति 2 दिन 4 दिन रे ट्रेन दुर्घटना होछि तार मुख्य कारण होछि एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रेलवे क्षेत्र रे एवं जो मेंटेनेंस हवा कथा जो कर्मचारी माने करिया कथा सेमानकर कर्मचारी संख्या मध्य सीमित सर मो टिके आपन को पाको जीबी आपन ए सरकार को ठार कोन आशा करछंती बजेट रे आज्ञा काहे की करा जाय बजेट वर्षक पय चिंता करा जाय आमे केमते सुस्थ रे रहबा तेणु सुस्थ पय प्रथम कथा होची काम नाही पिलांग पाखरे आ रोजगार मध्य नाही जहाँ अच्छी आम एम्प्लॉयमेंट कथा से चिंता कर ग्रास लेवल चिंता करिया कथा शिक्षा पूरा ये ताकू जीएसटी लगे ताकू अधिक पैसा बढ़े पिला माने पाठ पढ़ा रे बहुत हैरान होती तेणु जदि शिक्षा उपरे अधिक पैसा तो ग्रास लेवल खर्च करा जाए माने गोटे पिला को जदि लगे देखो पाठ पढ़ा पूर्व से गछटे केमती लगे सी केमती बढ़ेब से माने कृषि की शिक्षा सागर जोड़ी दि जाऊ कारण कृषि हूँ आम रोजगार मुख्य माध्यम ताकू शिक्षा सांगे जोगे जोड़ा जाऊ एवं से अधिक पैसा खर्च करा जाऊ एमाने जो बजेट करुँच आम से साटिस्फाइड नुह कारण आगु देखीचु एवं से गतानुगतिक बजेट हम से दरदाम वृद्धि होमें रोजगार करके पिला जहाँ देवु पाठ पढ़ा को तो से अंटू नहीं आउ सी पुणी कौन करेंगे यूथ हिसाब से तुम प्रतिक्रिया कौन डिजिटल इंडिया आड़ को जाऊँगी आधुनिकता आड़ को जाऊँगी देखु जेहेतु मु गोटे यूथ एवं वर्तमान मु अनएम्प्लॉयमेंट एइथिपाई जे मो पाखे ना जे मो पाखे नॉलेज नहीं ना मु गोटे एग्जाम क्लियर करि परिबनी मु एइथिपाई क्लियर करि परनी सरकार पोस्ट कम बाहर करछि सेथिपाई मु करि परनी मो पाखे टैलेंट अछि आउ जेतो पिला सब पाउ ना सेमान पाखे टैलेंट नै सेमान पाखे टैलेंट अछि वर्तमान आउ गोटा कथा कहूछि आपण जानिथिबे आईएलओ गोटे रिपोर्ट देछि इंडिया रे 83% अनएम्प्लॉयमेंट भीषण परिस्थिति वर्तमान भारत में किंतु ये सरकार सठिक तथ्य दौनी आदि गोटे युव एम्प्लॉयमेंट पाइलान से बाध्य कौन कर आवश्यकता अछि आवश्यकता हूँ प्रथम हूँ युवक मान को एम्प्लॉयमेंट देवा कथा द्वितीय कथा हूँ सार जोटा कहले गोटे छोट पिला जो एजुकेशन सिस्टम को वीक करा जाउछि कहीं आपन देखंतु 18% जीएसटी लगुछि एजुकेशन रे आपन गोटे पिलाट से पढ़िबो ना 18% जीएसटी माने कोन गोटे पिलाट बखर तुम लुटी कि नउछो गोटे सरकार काम होउछि गोटे पिला को एजुकेशन दबो सार जो कहले गछ लगेबे जो गोटे गछ लगेले से बढ़ी कि तापर भविष्य रे हमको ठीक
रूट दब ठीक जिनसटा आमको तृतीय थर सरकार आछंती आशा समस्तकर अछि किंतु नकारात्मक चिंताधारा भितर हम बाहर के किछि आशा करि परिबा आशा हमर एइटा मते लागुछि सर निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट एइटा निश्चय कंसीडर करू फास्ट यूथ मान को एम्प्लॉयमेंट दिया जाऊ एवं एजुकेशन टा को प्रॉपर वे रे निया जाऊ विभिन्न जगह जो लीक फिक हेउतला नीट फिट जंती सेतबळे बड़ से कारण अवॉइड करी हबो आगो को धीरे धीरे देखंतु अवॉइड आपण देखुतु काली रो नीट आपण तो देखि देबे जे हमर संसद रे डिबेट चलथिला त तब कहैदला माने 7 वर्ष रे केते थर नीट पेपर कि जहाँ भी हो लीक हो साराणी आपण आउरी पुणी आशा रखिबा जदी वरिष्ठ मानक पई भी किछि योजना हेइ पारे वरिष्ठ जदि पेंशन रे तांकर टैक्स जो माने पेंशन होल्डर तांकर टैक्स कमी जाऊ कारण से आउ जोड़े आम किसी पैसा डिपोजिट करूँ तापर आमको आउ टे अधिक जो दौरान 7% आउ परसेंट 2% रही आमर गोटे कौन डिपोजिट मनोवृत्ति बढ़ एवं सेटा पिलांग पई गोटे सेविंग हम तेणु सरकार से टैक्स रिलैक्सेशन बड़ बड़ कॉर्पोरेट सेक्टर आड़ को ढलुंट केंद्र सरकार किछि वर्ष हला आमे देखुचंती ए क्षेत्र में गरीब गुरुबा कथा केमती चिंता करा हाँ सब समय आप देखिए जो माने पुंजीपति श्रेणी लोक मैंने से सपक्ष ही बजेटा तैयारी होछि किंतु आपण देखिए जदि सही कृषि क्षेत्र पर गुरुत्व दि जाता कृषकर विकास पई बा कृषि फसलर उपयुक्त दाम दि जाई पारंता एवं कृषि को विकास करा जाई पारंता ताहले हुए तो अर्थनैतिक भाव आम किसी परिमाण रे तादरू आम ये पाई पारंते तेणु आमको कृषि प्रति गुरुत्व देवा निहाती आवश्यक शिल्प अपेक्षा अविनाश विभिन्न प्रकार मतामत आसुला विभिन्न वर्गर लोकंक ठारू आपण देखुचंती जे गत दुईटे टर्म रे जते बजेट हेछि सेते आशातीत सफलता मिली नाही बा खुशी नहांती साधारण बुद्धिजीवी माने किंतु सबु बेले तो समाने नकारात्मक रही परिबे जेंति युवक जनक कहउतिले एबे भी हमर आशा अछि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हबो वयस्कक पई किछि भलो स्कीम हबो विशेष करी कृषि चाष ए साधारण लोकंक कथा सरकार गुरुत्व देबे ए कथा आशा रखिचंती साधारण बुद्धिजीवी निश्चित भाव अनेक अनेक धन्यवाद अजय आपन सूचना पई विशुद्ध भाव कटक रु शुणुले किसी बुद्धिजीवी किसी युवक छात्र से प्रतिक्रिया 2024 बजेट रे सेमानकर कौन आशा अच्छी दर्शक बंधु मार्केट रो रिएक्शन नेगेटिव किंतु बजेट उपस्थापन हेनी मार्केट निफ्टी 24,450 एवं बैंक निफ्टी 52,208 सेंसेक्स भी 80,000 तलक आसलानी संभवतः जदि बजेट रे आपणकर कैपिटल मार्केट बा शेयर मार्केट पाई से भली किछि सेमानक मुताबक जदि बजेट ठीक ठाक न हुए तो आमे आज अनेक गुड़िए फॉल देखिपारती विभिन्न सेक्टराल फॉल किंतु ए भितर किछि पीएसयू सेक्टर भी 6-7% वृद्धि आरबीएनएल टू आरंभ करी जो रेलवे सेक्टर जो सब स्टॉक्स रही इक्विटी मार्केट रे से बेस भल कर आमे विशुद्ध भाव में कथा होउतले मु आसीबी श्रीयुक्त राजनाथ त्रिपाठी आपन पाखु आमे जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कथा मु उल्लेख करथली 24B जो सेक्शन टी अधिक गुरुत्वपूर्ण 2014 रे लास्ट टाइम पाई से माने करथिले गोटिए कैपिंग देथिले 2014 रे लास्ट टाइम कैपिंग दिया 45 लाख रो जो कहुला मेट्रो और नॉन मेट्रो से फिक्स करते सहित आउ गोटे कथा थिला जे आपणकर जो 2 लाख टंकार आपण जो रिबेट दौरान 5 लाख टंका पर्यंत करा जाऊ एवं रियल इस्टेट सेक्टर कहवा कथा जे आपण क्रेता पाखु टंका नौछंती आपण विक्रेता पाखु टंका नौछंती एवं ये ओवरऑल सेही लोकटी मुंडरे बोझ पड़ुची जो लोकटी घर किणुची तेणु आपण को रियल इस्टेट सेक्टर रे गोटे जो सिंगल विंडो क्लीयरेंस कथा हला टैक्सेशन रो सरलीकरण कथा हला जीएसटी कम करबा कथा हला रॉ मटेरियल कॉस्ट उपरे आपण जीएसटी नौछंती आपण कंस्ट्रक्शन हाउस उपरे जीएसटी नौछंती ए जो एते प्रकार रो कर आपण नौछंती आजिका समय ये गोटे बड़ आह्वान कि जदि आपण प्रकृत रे चाहउछंती लोकटे घर पाऊ तापई अत्यंत सरल भाव में व्यवस्था करा जाय देखो अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो टिकस रियाती थिला से मझिरे उठी दिया हिची तेणु ताकू आउथरे इंट्रोड्यूस करा जाऊ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रति एवं जाफल आज देखिए किसी भारत वर्ष एमती किसी एक्चुअल स्टेट अच्छी एमती किसी बड़ बड़ टाउन अच्छी जो कॉस्ट स्काई रॉकेटिंग हो गलानी एवं सेठी गोटे मिडिल क्लास लोक तापई रहिबा असंभव तेणु से क्षेत्र में अफोर्डेबल हाउसिंग ताकू प्रमोट दरकार विशेषकर से सिटी जोटी कॉस्ट बहुत अधिक परिमाण रही जाइए मिडिल क्लास को आखि आगे रखिक से सिटी को टार्गेट कराई करे द्वितीय जिन हूँ लैंड कॉस्ट को कमेवाई गोटे स्पेसिफिक देखो विभिन्न राज्य में लैंड सीलिंग एक्ट अच्छी किंतु कार्यकारी करा एवं कार्यकारी करा जो मानसिकता दरकार से मानसिकता ना तार सबुठ बड़ जिन किसी राज्य में जो सॉफ्टवेयर टिक डेभलप कर गोटे लैंड आप आजिका डेट रे एते टेक्नोलोजी डेभलप कलानी आप जब आधार मारदेवे गोटे लोकर लैंड होल्डिंग्स आप जापर आधार नंबर टी पकड़ किसी करा जाऊनी किसी राज्य में
तेणु ताको सेंटर देखिबा दरकार से राज्य रे जो राज्य करा जाउनी केमते टेक्नोलॉजी फोकस दिया जाई आपण लैंड रो इमीडिएट गोटे सेकंड रे लैंड विवरणी जणा पड़िबो ताको इनकम टैक्स सहित लिंकेज करा जिवो जा फल जो कथा हमें कहूचे जे गोटे लोक समस्त नीड सैटिस्फाई करिया पई पृथ्वी रे सब प्रकार संपद अछि किंतु गोटे लोकर ग्रिड सैटिस्फाई करिया पई संपद नाही जो मानकर ग्रिड बहु परिमाण रे लैंड मु किन देबी लैंड होर्डिंग करी रखिबी बिल्डिंग गुडा को होर्डिंग करी रखिबी जा फल बहुत लोक अफेक्टेड होउछनी ए जो ग्रिडनेस को कमिया पई लॉ अछि तापे लैंड सीलिंग एक्ट अछि किंतु मानसिकता नाही किंतु लैंड सीलिंग एक्ट रे भी आपण जो कथा उल्लेख कले जे आमे एबे सैटेलाइट सर्वे इंप्लीमेंट करछुते आपण जहा कहले जे जनक पाखरे केते परिमाण रो लैंड अछि ताकू लॉ अछि किंतु ताकू वास्तविक इंप्लीमेंट होई परिबोनी आपण जदी गोटे लोकर लैंड खोजे को कहबो वर्ष वर्ष लागि जिवो गोटे लोकर लैंड आपण जानि परिबेनी ठीक अछि केमिति सेही गुडा को आज्ञा लैंड कॉस्ट कमिबो दुई रे टिकस रियाती दबा दरकार अफोर्डेबल हाउसिंग ता होची प्राइम नीड रूरल हाउसिंग जेमती आमे देखुचे ग्रामीण इलाका रे अफोर्डेबल हाउसिंग सेमती अर्बन एरिया रे ई दुईटा जांक को फोकस दबा दरकार एवं सेथिरे बिल्डर्स मान को मध्ये रियाती रिया दरकार टिकस रियाती प्लस ता सहित जो माने बायर्स अछन तांको मान को मध्ये जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स रियाती होइबा निहाती दरकार आ ए जो कंपोनेंट कॉस्ट जो कुटा रहिले कंपोनेंट कॉस्ट ता ऊपर को सेक्टर रे काटेल होची ताकू के दृष्टि दबा दरकार जोटी काटेल होची से काटेल को भांगियो पे एवं फेयर प्ले कंपटीशन रहया पे ता ऊपर दृष्टि दबा दरकार तापरे सेकंड जिंस होची जो क्षेत्र रे आपण देखिबे जे कॉस्ट ता बेसी बढ़ी जाउची जो कंपोनेंट ता से कंपोनेंट ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाई गवर्नमेंट निजे मध्ये सेतरे पसिबा दरकार जा फल जदि गोटे प्राइवेट सेक्टर बहु परिमाण रे लैंड माने गोटे पर्टिकुलर कंपोनेंट मोनोपोली बढ़ौची से सेक्टर गवर्नमेंट मध्ये निजे किछि किछि बिजनेस सेक्टर रखिबा दरकार जापड़े प्राइवेट मोनोपोली को काउंट ठीक अछि ये तो रियल एस्टेट रो कथा थिला किंतु मनीषा मैडम मुटिके शिक्षा को आसिया पई चाहिबी जे 50% ग्रेजुएट आपण चाकरी पाउ नाहंते अनएम्प्लॉयड बसचंती ए कथा मध्ये देखियो को मिलुची आपण कोन देखुचंती शिक्षा नीति आसिला एवं वर्तमान समय स्किल एजुकेशन कथा में लास्ट किछि वर्ष हला बारंबार कहि आसुचे किंतु वर्तमान समय स्थिति कौन देखुं पेपर लीक गोटे सिस्टम पर भरोसा लोकंकर तुटी गलानी पिलांकर निश्चिंत भाव एटा गोटे माने अत्यंत दुर्भाग्यर विषय आमे कहया को जिवु केतले सरकार मानिबा को भी राजी होउ नाहंती माने नीट भलिया गोटे दुर्नीति एते बड़ शिक्षा मंत्री तो आधा समय पर्यंत सेथरे से तांकर मंतव्य ही दे पारनथले से स्टेटमेंट देइतिले प्रथम से स्टेटमेंट देइतिले जे नीट रे कोनोसी प्रकार एनटीए रो कोनोसी त्रुटि नाही नीट रे जहा हिचे सब स्वच्छतामूलक हिचे तापर धीरे धीरे जेतेबेले सब जिंस पर्दा को आसीला सेतेबेले को से टिके 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 ता भीतर को पसिले काली मध्ये आमे देखिछु आपनकर भलिया संसद रे से सेटा को प्रमाण नाही बोली कहि के काटिले एटा नियाती माने कोनते जो लज्जाजनक घटना बोली आमे कहबो माने जे जानि कि सोइचे ताको आपण केमती उठेइबे से भलिया अवस्था हिचे तो जो देश रे आपनकर खाली नीट कथा कहउनी आपण यूपीएससी वर्तमान देखंतु यूपीएससी रे कोटा रो केमती आपनकर आईएएस रे कोटारे जो आपनकर पूजा खेडेकर बदे पूजा खेडेकर केस देखंतु आ गोटे ईएसडब्ल्यू कोटा केस देखंतु आपनकर माने जदी मु चाली जीबी बाचस्पति को झियो से कथा भी मध्य मझिरे उठितिला अंजलि बिरला को कथा भी उठितिला तो विभिन्न ताले एइथरो कोन तापर आपनकर यूपीएससी अध्यक्ष वर्तमान इस्तीफा मध्य दे सारलेनी तो एई जो यूपीएससी भलिया जगह रे जदी हाई स्केल रे जदी दुर्नीति होउची सेई जगह रे आपन गवर्नमेंट ऊपर भरोसा करिवे केमती अनएम्प्लॉयमेंट वर्तमान देशर सबुठारु बड़ थ्रेट हिसाब रे आमे कहबो खाली अनएम्प्लॉयमेंट कहले कोन हो सरकार स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पाई गोटे पॉलिसी आनी पारले नाही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जोटा कोआ होची जदि आमे मूलरू जेमती जड़े लोक ये टीवी रे कहउतले वर्तमान मु सुनुतली माने जदि छुआ को कृषि पाठ सहित कृषि को जोड़ी दिया जीवो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को जोड़ी दिया जीवो गछटिए लगेया को शिक्षा दिया जीवो से जगह रे तो से एनवायरनमेंट भी हेई सरला से पिला माने जानि पारले जे आधुनिक टेक्नोलॉजी रे केमती चाष करि परिबे विभिन्न जिंस तो स्किल बेस्ड एजुकेशन पाई आपनकर व्यापक चेंजेस चाहिए दरकार अछि सेथरे किंतु सरकार सही जिंस प्रति कोनोसी प्रकार दृष्टि दो जोडे स्किल सेंटर कर देले आपण नहीं गोटे जोडे स्किल सेंटर रे आज्ञा हेई परिबो नाही से खाली गोटे नाम मात्र हमको देखा जाउची जे स्किल सेंटर तयारी कराइछि दक्षता विकास केंद्र कराइछि सेटा तो हेगला तापर आपण देखो जो स्किल सेंटर रो पिला माने जॉब भी पाउचंती से माने 5000 7000 मैक्सिमम 22000 पर्यंत जाउचंती तो सेतिक रे वर्तमान रो इन्फ्लेशन रेट रे से माने परिवार प्रतिपोषण करि परिबे कि सेतिक मात्रा रे तेणु जदि दिया होची चाकरी से गोटे नाक मात्र चाकरी चाकरी रो कोनसी मूल्य नाही सेटा परिवार चली परिबो कि सही जगह ए भीतर दुईटी सूचना मध्ये हां एनी टाइम एनीवेयर स्किल डेवलपमेंट भारत भलिया गोटे कंट्री रे एट ए टाइम कोटी लोक को आपण जदि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दबाउ चाहिए तेबे सेमती क्लासरूम टाइप रो हेई परिबो नाही
तापे स्किल बेस्ड चैनल डेवलप करिया पड़िबो गला बजेट रे मध्ये हमें से कहितले जे स्किल बेस्ड चैनल डेवलप होवा दरकार जहाँफल गोटे लोक जी भी चाहिए जिते चाहिए जो समय चाहिए सी तार टीवी रे स्क्रीन रे मान देखिपर ताको टेलीविजन सहित लिंकेज करदे टेलीविजन टा कौन होची मैक्सिमम पेनिट्रेशन बर्तमान टेलीविजन रे अच्छी इवन इंटरनेट रे जने लोक एते समय देखि परिबो ना टेलीविजन जेहेतु मैक्सिमम पेनिट्रेशन अच्छी भारत वर्ष में तेणु टेलीविजन सहित चैनल गुड़ाक लिंक करदे पर्टिकुलर यही बेस्ड स्किल जड़े चाड़िया चाहूँगी तार से टेलीविजन खोलिबो से चैनल खोलिबो देखिए ऐड करया पय जो 2022-23 रे गोटे डिजिटल यूनिवर्सिटी घोषणा हला प्लान्स फॉर एस्टैब्लिशिंग ए डिजिटल यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन एंड प्रमोट रिसर्च तार स्थिति को समझ जानचो 2023-24 बजेट रहला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन allocation of 50,000 crore over 5 years to promote the research in science and humanities ए संपर्क रे मध्य परवर्ती समय आमे जो कथा कहूँ दुई तीन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय आपण कोटिए लोक एकाठी क्लासरूम रे केबे शिक्षा दे परिबे नाही तेणु स्वाभाविक भाव में सही चैनल डेवलप करिवार अछि जोथिरे आमे एकाठी एते संख्यक लोक को शामिल करै परिबा दर्शक बंधु आउ किछि प्रतिक्रिया मध्य आमर हस्तगत होइछि प्रतिक्रिया सुनंतु कोन रहुछि लोकंकर आशा आकांक्षा बजेट को नहीं उम्मीद करते हैं ये बजट जो है विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा कल जो सर्वे आया है दर्शक बंधु सीधा सड़क विधानसभा जीवा विधानसभा आरंभ हो जाइछि एवं विधानसभा रे हट्टगोल आरंभ हो जाइछि सभा आरंभ होगा सहित हट्टगोल मध्य आरंभ होइछि विधानसभा मुलतवी रहिला बाचस्पति सुरमा पाढ़ी मुलतवी घोषणा कले फेरिबा पुणी थे से प्रसंग जो चर्चा और आलोचना करते किसी प्रतिक्रिया थिला आपण सुनंतु प्रतिक्रिया मैं बस यही कहूंगी जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है और जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बेरोजगारी देख लीजिए चरम सीमा पे है। मुंबई में के भी इतने सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां 1000 लोगों के लिए नौकरी लगती है 25,000 लोग आते हैं। अग्निवीर को लेकर वैसे ही बहुत जनता में आक्रोश है, खास करके युवा वर्ग में आक्रोश है। दर्शक बंधु विधानसभा खबर को पुणी थे फेरिबा जहाँ सूचना अच्छी सहयोगी अरुण जहाँ मत उल्लेख कले विधानसभा मुलतवी रही विधानसभा कार्य आरंभ होगा क्षणी होहल्ला करते विरोधी विधानसभा द्वितीय दिन में भी हट्टगोल और ता परवर्ती समय तत्क्षणात विधानसभा को मुलतवी रखा जाइछि। विधानसभा द्वितीय दिन में हट्टगोल नहीं सूचना आसुछि एवं बाचस्पति सुरमा पाढ़ी गृह को मुलतवी रखिंट जहाँ सूचना सहयोगी प्रिय उल्लेख कर 11टा जाए मुलतवी रही विधानसभा द्वितीय दिन प्रश्नोत्तर काल आरंभ राज्यपाल पुओं गिरफ्तारी दाबी कले विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक गृहर मध्यभाग बीजेडी प्रतिवाद ओडिया अस्मिता विरोध में बीजेपी को टार्गेट कर गृह कार्य 11टा पर्यंत मुलतवी रही। गुरुत्वपूर्ण सूचना विरोधी बीजेडी देइथिला मुलतवी प्रस्ताव ग्रहण कर बाचस्पति उत्तर रखिबे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र 10टा बेले सूचना थिला एवं ठीक 10:30 बेले जेतेबेले आरंभ होला विधानसभा द्वितीय दिन में ओडिया अस्मिता प्रसंग में बीजेपी को टार्गेट करथिला बीजेडी मुख्य विरोधी दल एवं विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक कहीं राज्यपाल पुओं को गिरफ करा नहीं ए प्रसंग में से प्रश्न उठाइथिले एवं विधानसभा द्वितीय दिन प्रश्नोत्तर काल आरंभ हट्टगोल हंगामा होइतिला। ता परवर्ती समय गृह कार्य 11:30 जाए मुलतवी रखा जाइछि। गृह कार्य 11:30 पर्यंत मुलतवी रखा जाइछि। ए संपर्क में सूचना आसुछि प्रियप्रीतम महांती सहयोगी जहाँ सूचना प्रदान करथिले आरंभ गृह अचल द्वितीय दिन में गृह को मुलतवी रखिंट बाचस्पति। विधानसभा द्वितीय दिन प्रश्नोत्तर काल आरंभ राज्यपाल पुअर गिरफ्तारी दाबी कर विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक गृहर मध्यभाग में बीजेडी प्रतिवाद आपण देखुथिले ओडिया अस्मिता विरोध में से बीजेपी को टार्गेट कर जो गृह कार्य घंटाए अर्थात 11:30 पर्यंत मुलतवी रखा जाइछि। बाचस्पति जितेबाला कौन अभियोग आसे से मंत्री हूँ जी भी हूँ एक्शन मु नौली किंतु ए पर्यंत कहीं एक्शन है ताकू नहीं प्रश्न उठी चिन्मय महापात्र आम सहित जोड़ी होती। चिन्मय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ हट्टगोल देखा मिली मध्यभाग को बीजेडी आसी कांग्रेस रोल कि भाव रही वर्तमान समय मुलतवी घोषणा कर चिन्मय शुणी पार्छ आमको कटी ठीक अच्छे चिन्मय महापात्र खूब शीघ्र जोड़ी हे जहाँ अविनाश सूचना प्रदान करते ये गोटे स्पष्ट वार्ता जे राज्यपाल पुओ जदि भूल करें तदंत हो पुलिस ए संपर्क में तदंत करू एवं तांको विरोध में कहीं कार्यानुष्ठान हम ना जहाँ केवल विजु जनता दल नुहे कांग्रेस कहतु सीपीआई कहतु राज्यर सबू प्रमुख दल जहाँ जुलाई 7 तारिख दिन घटना घटिला पुरी रे आसबि चिन्मय आपण पाखु चिन्मय विधानसभा द्वितीय दिन में हट्टगोल विधानसभा अधिक सूचना कौन आसुछि संपर्क में
द्वितीय दिन विधानसभा गृह कार्य आरंभ होगा कि ये रही विरोधी दल मुख्य सचिव प्रमिला मल्लिक सीधासल निज आसन उठिक बाचस्पति को पॉइंट अर्डर मागी सीधासल गोटे कथा कहते 7 तारिख में जो भाव में जड़े ओडिया सरकारी अधिकारी को राज्यपाल नलिन कुमार एवं सहयोगी मैंने माड़ मारे 12 तारिख दिन एफआईआर है एवं आज पर्यंत कौन पुलिस चुप बस सरकार कहीं चुप बस कहीं ओडिया सरकारी अधिकारी को न्याय दि जाऊनी नहीं से स्वर उठे प्रश्न पचार चेयर को से समय देखा गई जो कथा कही देखिए बीजेपी क्षमता को आसला जे ओडिया अस्मिता कही क्षमता को आसला ओडिया अस्मिता बर्तमान कुआड़े गला बोली बीजेडी प्रश्न कर मुख्य विरोधी एवं सीधा सड़क गृह मध्यभाग आसी बीजेडी समस्त विधायक माने हट्टगोल करते नाराबाजी करते प्रश्न करते जेहेतु विजु जनता दल को ओडिशावासी विरोध दल भूमिका बसई सशक्त विरोध दल भूमिका निभाऊँ लोकों स्वर चाची तेणु जिते जड़े ओडिया सरकारी अधिकारी माड़ खाई तेणु विजु जनता दल कौन विधायक चुप होगी बसुना से सीधा सड़क प्रश्न पचार चेयर को तुरंत से न्याय दि जाऊ जो मैंने कांड कर जो ओडिया अस्मिता कथा कही सरकार आपने आसती तेणु ओडिया अस्मिता केते आपण देखते कहीं राज्यपाल पुओं विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नियादिनी कहीं वैकुंठ प्रधान को न्याय मिलूनी ये दाबी नहीं कि जिते प्रमिला मल्लिक एवं बीजेडी तमाम विधायक मैंने जो गृह मध्यभाग प्रश्न पचार चेयर को हट्टगोल जो बाचस्पति गृह को 11:30 पर्यंत मुलतवी कर सबुठ बड़ प्रश्न हूँ जो भाव में आईन बर्तमान जो सरकार आप जानते काली निजे विरोध दल नेता गृह कथा कहते ओडिशार आईन श्रृंखला विपर्यस्त होती जो मो दल से देखिए दुख प्रकाश करूँ बर्तमान प्रश्न हूँ जो कथा आज विजु जनता दल प्रश्न करती चेयर को कहीं वैकुंठ प्रधान को न्याय मिलूनी चिन्मय गत काली सरकारी दल तरफ आईन मंत्री प्रतिक्रिया रखिते प्रथम देखिए आप 7 दिन समय मागिते पुणी 15 दिन एवं एवं कहुँ जिलापाल यार तदंत कर सब भितर व्यस्त कहीं होती विरोधी दल एक आईन मंत्री गत काली कहते देखो आईन मंत्री जेहेतु सरकार पक्षर से जुक्ति बाड़ी से जो कथा कहते दुईटी कथा अविनाश देवी आप देखिए जे राज्यपाल जितेबाला वैकुंठनाथ परिवार को भेटी 7 दिन भितर न्याय देवाई कहते 7 दिन भितर समय नहीं किंतु सरकार बारंबार विभिन्न राजनीतिक दल राजरास्ता को ओल्लैंती वैकुंठ प्रधान परिवार न्याय मागुंट से समय सरकार जो निदा विष्णु आछि पुलिस प्रशासन को घंट गोड़ दुखर विषय कौन हो पारे आचार्य प्रतिक्रिया शुणुले विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य कहते सरकार घंट घोड़ौंती एवं कहीं कार्यानुष्ठान नौ ना ताठू बड़ दुखर कथा किसी ना एक प्रसन्न आचार्य प्रतिक्रिया रही है चिन्मय आम सहित कहते चिन्मय प्रसन्न आचार्य भी प्रतिक्रिया रखुते संपर्क में बड़ दुखर कथा ठार कौन देखो निश्चित भाव में कारण पंडित पुओ जमी मांकड़ मारे दोष नहीं सेमती राज्यपाल पुओ जो आईन को हाथ को नहीं जड़े ओडिया अधिकारी को माड़ मार्च पुणी सहयोगी ये जो घटना घटी 7 तारिख दिन आपको कहीं गंभीरतार सह नौना सरकार कहीं दोषी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान केवल से राज्यपाल पुओ बोली ये कथा बीजेडी प्रश्न पचार बीजेडी कही आसला विधानसभा अधिवेशन पूर्व जे आमको लोक मैंने विरोध दल भूमिका बसई आम सशक्त विरोधी ए पर्यंत न्याय दिहला ना गवर्नर डाकी आलोचना कले मुख्यमंत्री डाकिक आलोचना कले कौन आलोचना कले से कथा लोकलोचन को आसला नहीं न्याय मिलला नहीं बरं ट्रांसफर करदेला ओडिया अस्मिता कहीकि आसीथिबा सरकार ओडिया को किभଳି भाव में सम्मान दिया जाउची से कथा एटू स्पष्ट अनुमय होची मॉर्निंग शोज ऑफ डे जो भली भाव में सरकार प्रथम दिन जना पड़ी किभଳି भाव में ओडिया अस्मिता को सुरक्षा दे पारिबे ओडिया अस्मिता कहीकि सरकार को आसती ओडिया लोक सुरक्षा दे पारना ये सबको जो भली भाव में माड़ मरा अपमानित कराला ताकू एपर्यंत न्याय देला नहीं बरं काली आईन मंत्री स्टेटमेंट देइचंती कलेक्टर इनक्वारी करेंगे कौटी फौजदारी मामला कलेक्टर इनक्वारी कौ दिन कले एसपी डीएसपी आईआईसी जो केस रजिस्ट्रेशन करते कलेक्टर इनक्वारी करेंगे यही भाव में दायित्वहीन वक्तव्य दबा एवं ए घटना को घोड़ाई जो प्रकार प्रयास जारी रखिंट सरकार तेणु आमर दाबी मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिंतु कि प्रकार न्याय देइचंती एसको कि प्रकार न्याय देइचंती ओडिया अस्मिता को किभଳି भाव में सुरक्षा दउचंती
मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दियंतु उत्तर रखंतु की प्रकार सुरक्षा देइचंती एसकु ओडिया अस्मिता को किभଳି भाबरे सुरक्षा देइचंती मुख्यमंत्री गृह रे विवृति रखंतु। प्रमिला मल्लिक प्रतिक्रिया आपण शुणुले मुख्यमंत्री गृह में विवृति रखंतु ओडिया अस्मिता को किभଳି भाबरे सुरक्षा दिया जाउछि आ ओडिया अस्मिता प्रसंग में भारतीय जनता पार्टी शासन क्षमता को आसीथिला एवं काहेकि ए पर्यंत कार्यानुष्ठान नैनी जिलापाल तदंत करिवे एक फौजदारी मामलार जोठी केस रजिस्टर करुछंती आईआईसी ए संपर्क रे एवं ए कथा को नेकी मध्य प्रश्न उठैछंती। चिन्मय प्रमिला मल्लिक पर प्रतिक्रिया मध्य संपर्क रे आस्तुला देखंतु जेतळे सरकार क्यूब बसचंती जने ओडिया अधिकारी को माड़ मरा जायछि एवं सेही समय बीजेडी एको मुख्य प्रसंग करछि एवं प्रश्न पचाउछि काहेकि गोटे साधारण लोकन को न्याय दिया जीवनी काहेकि साधारण लोकन को न्याय दबार सरकार एते विलंब करछंती ए प्रश्न पचाछि बीजेडी एवं जोति पई कि आज देखिबे प्रमिला मल्लिक सीधासलख निज आसन रु छिड़ा है कि प्रश्न करथिले कारण ए घटना आपण देखिबे जो घटना 7 तारिख दिन घटिला 12 तारिख दिन एफआईआर दिगला राज्यपाल भी समस्त चुप हो बसचंती चुप हो बसचंती विरुद्ध में बीजेडी स्वर उत्तोलन करुछि। ठीक अच्छे अनेक अनेक धन्यवाद चिन्मय आपन सूचना पाई। गृह मध्यभाग में बीजेडी प्रतिवाद द्वितीय दिन में गृह अचल 11:30 पर्यंत गृह मुलतवी आसवा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट परिसर में हंगामा देखा मिली कारण आउ 20 मिनिट 19 मिनिट पर गृह कार्य आरंभ हो 11टा बेलू जो बजेट उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ता पूर्व आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा अच्छा संजय सिंह अच्छा आपणकर अन्य वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी अच्छा सीबीआई और ईडी दुरुपयोग बंद कर से सीधासलख भाव में पार्लियामेंट सम्मुखें प्लाकार्ड धरी पखापाखि जो मैंने तानाशाही नहीं चलेगी सीधासलख भाव में आप देखुं आम आदमी पार्टी जो मैंने निर्वाचित सांसद अच्छा राज्यसभा लोकसभा से समस्ते से हंगामा कर पार्लियामेंट बाहर मनीष तिवारी बाइट आसुछि। We want to make sure that there has been very stubborn food inflation, which has now been holding the field for many months, if not a year. And there was a very funny recommendation in the economic survey that food inflation should be taken out of the ambit while calculating a cut in interest rates. So therefore, under those circumstances, it is imperative that the farmers and the common man, which has been reeling under the impact of inflation, their concerns need to be factored in. And obviously, the in the farm sector, there's a lot of agrarian distress, as reflected by increased Manrega allocations over the years. So one does hope that these very critical elements will be taken care of by the finance minister when she presents the budget. Thank you, sir. मनीष तिवारी प्रतिक्रिया से कहले जे गोटे फनी रेकमेंडेशन एथर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रे हेची किंतु ता ऊपर अधिक गुरुत्व देवार आवश्यकता एथिपाई अछि कारण फूड इन्फ्लेशन लगातार भाव में बढ़ुची देश में आमे आपण सीपीआई को कंट्रोल करि परनांती इंडेक्स एवं एपटे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करि परनांती आपनकर जेतिकी रहिबा कथा सेही अनुपात रे यथेष्ट अधिक रहिछि गोटे समय थिला डबल डिजिट को मध्य जाइथिला फिगर तेणु ए संपर्क में मिहिर राय आमस्त अछंती बिजू जनता दल रो मुखपात्र सीधासलख भाव में नेता आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त मिहिर राय आपण को स्वागत करुच्ची एथर बजेट रु कौन आप आशा कर 2024-25 बजेट कौन राहुल गांधी विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सांसद से पार्लियामेंट को प्रवेश करुच्चंती आ किछ समय पर आरंभ हेबो आपणकर बजेट उपस्थापन विरोधी दल नेता राहुल गांधी वर्तमान पार्लियामेंट रे पहुंचले श्रीयुक्त राय मुझे कथा उल्लेख करुली कौन आप आशा कर बजेट रु एवं कौन दिग रही बड़ चैलेंज रही फाइनेंस डिपार्टमेंट सामने मिनिस्ट्री सामने एथर बजेट उपस्थापन नहीं जड़े ओडिशार नागरिक हिसाब रे डेफिनेटली एथरक विशेष करी गोटे स्पेशल एक्सपेक्टेशंस रही ओडिशावासी भी आम मानकर भी कहीं गोटे फर्स्ट टाइम जोटा से माने जो बहुत नारा पॉलिटिकली नारा गोटे चली जे डबल इंजिन से जो डबल इंजिन एथरक कौन डिलीवरी करुची तो सेटा हूँ सबुठारु बड़ एक्सपेक्टेशन आपण मैंने समस्ते जानती जे 2014 मसीह बीजेपी निजे तार इलेक्शन मैनिफेस्टो रे से कही जे स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस दियो तो यही जो डिमांडटा स्पेशल स्टेट कैटेगरी स्टेटस कथाटा आमे बारंबार 2012 मसीह आमे डिमांड करी आसुछु एवं तापाई आपण विभिन्न प्रकार आंदोलनात्मक कार्यक्रम ग्रहण करा जायतिला तो वर्तमान से माने जो कहते गोटे जो स्पेशल फंड जो गोटे पैकेज दवापाई ओडिशा पई
ओडिशा बीजेपी तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार को पाखरे दाबी करा जाइछि तेणुक सेटा गोटे फोकस पॉइंट जे कि प्रकृत रे जे केंद्र सरकार कौन समर्थन जनाउछंदी ए जो आमर तो दाबी निश्चित भाव रही स्पेशल स्टेट स्टेटस कथा एवं माने जो दाबी करछंदी जे कि स्पेशल फंड्स पैकेज जो पैकेज गोटे देबे तो जो कथाटा मध्य आपण माने जानिथिबे जे आंध्र प्रदेश मध्य मागिछि बिहार मध्य मागिछि एवं जेहेतु काश्मीर एवं झारखंड रे निर्वाचन हबा को जाउछि तेणुकरी सेमाने दी जण मध्य से दीटा स्टेट मध्य रही तो ओडिशा को मिसे कि 5टा स्टेट गोटे जो स्पेशल पैकेज गोटे एक्सपेक्टेशन रही जोटा गोटे ओडिशावासी तरफ गोटे सेटा गोटे बड़ नजर रही एवं द्वितीय कथा जे कि जो रूटीन एक्सपेक्टेशन जमती अनाउंसमेंट होता कोस्टाल हाईवे कथा एवं से माने भी निर्वाचन में कही जे कि कोस्टाल हाईवे आम आसिया माने कोस्टाल हाईवे प्रोजेक्ट आरंभ हम एवं कोस्टाल हाईवे कथाटा बारंबार मते बिजु जनता दल तरफ उठा जाउतला आपण देखिथिबे जे कि जेटा अनाउंसमेंट हेइतिला किंतु तार डेडलाइन क्रॉस करि जाइथिले मध्य हेइ पारु नथिला एवं तेणुकरी सेटा मध्य गोटे बड़ नजर रे रहिछि हमर एवं अन्यान्य डिमांड तांकर रहिछि जेमिति धरंतु एम्स कथा उठैचंदी सेकेंड कैंपस एट संबलपुर बेली कुहा जाइछि सुभद्रा योजना को गोटे फाइनेंशियल असिस्टेंस कथा कुहा जाइछि तेणुकरी ए सब जिंस जोटा रही ता सांगे आपणकर जो जो एलोकेशंस हम फंड सेमती रेलवे कथा ऑलरेडी आमर केंद्र रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कही 5 वर्ष 1 लाख कोटी खर्च हम किंतु कथा होची जे कि आमे जोटा प्रैक्टिकली देखि आसुछु जे 10,000 कोटी टंका अनाउंसमेंट हो जाउची कि एलोकेशन हो जाउची जे किंतु खर्च हला बेल को 2,000 2,500 कोटी टंका भितर सीमित हो जाउची माने आपण धरन गोटे 20-25 ये एवं ओडिशा जो जातीय मापदंड अच्छी जो नेशनल एवरेज अच्छी जो रेल कंस्ट्रक्शन ताड़ बहुत तले रही आप लेस देन 25 किलोमीटर्स गोटे वर्ष से तेणुक ओडिशार जो मान रही जो ओडिशार निजे केंद्र मंत्री अच्छा तेणुक ये जो ताकू इम्प्रूव करार अच्छी घोषणा तो बहुत कथा हो तेणुक सेटा किंतु प्रश्नवाची रही जे कि केते सफलतार सहित ताकू इम्प्लीमेंट करा जीवो बहुत गुड़ा प्रोजेक्ट आमर पेंडिंग रही इनऑर्डिनेट डिले ही चलती जो प्रोजेक्ट गुड़ा आप सिमिलरली आप देखिए नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कह जाऊँगी नेशनल हाईवे रे भी जो तांकर जातीय एवरेज अच्छी जो पर डे से माने कहते 34 किलोमीटर पर डे कंस्ट्रक्शन होची किंतु ओडिशा रे ये पार बिलो अछि माने ओडिशा रे गोटे किलोमीटर टे मत पर डे पाखर ओवरब्रिज काम चालची जे चालची लोक फसुचंती संध्या NX55 तो गोटे ग्लेयरिंग एग्जांपल हे की रही अछि निश्चित रमनास आमे आगु को मध्ये बढ़िबा कि दर्शक बंधु समय होइछि एक छोटिया कमर्शियल ब्रेक रो कारण आउ 13 मिनिट 12 मिनिट हम पाखरे अछि आउ तापरे ठीक 11टा बेले बजेट उपस्थापन हेबो आमे बजेट भी देखिबा ब्रेक टी नबा जीवन को किया भरोसा आज अच्छी काली की नहीं बुढ़ाटा हेलुनी तोर तो बुद्धि सुधी नहीं घर को जा से नानी मां डाकुथबे मु जीविनी गांधी भाई भाई ताकर कार मन उंजास बोल नाही मु जीविनी भगत विदुर साग भजा दे तो साई पारिला मोर सारा जगत लगाई अठा मोकालिया ठाकुर मिठा बासन थाई चंदन बन कुनिंदा भावन थाई भजन प्रभु कुनिंदा आखि बुझाकू लुह बुझा आखि बुझाकू लुह बुझा ओडिशा ना आम मो शाशु शशुर आउछंदी बा
आसुनु कौन हो मधुआ सांग जबे मिल जानती मोर नौका खटीटे हुए कंपी जाए बाजार बंधु बांधव आसे तो मुंडो कर मधुआ 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 बे बाहर को सो मो झुओ को एमिति कहलानी बे बाहर को बापा बो आलो झुओ तमे घर को तमे घर को माछ पाई जाइथिलु माछ काई ओडिशा मद पी देकी रहिलु मंगलवार रात्रि 9:30 सह प्रायोजक गिफ्ट ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा। ओम नमः शिवाय। वर्षक भितरे 12 मास ए 12 मास भितरे श्रेष्ठ मास होची श्रावण। काहेकि श्रेष्ठ मास श्रावण आउ ये श्रावण मास सहित प्रभु शंकरंकर की महात्म्य रही आसंतु एई समस्त वृत्तांत जानिबा आमर एई श्रावणी महात्म्य प्रत्येक दिन प्रातः 6:30 समय। स्टार्ट विरोधी पर स्वागत बजेट पर चर्चा करुच्छे आउ 7 ରୁ 8 मिनिट भितर बजेट उपस्थापन हम आम सहित मनीषा मैडम मनीषा मैडम जब ओडिशार एक्सपेक्टेशन कथा कहते श्रीयुक्त मिहिर राय रेलवे ठारू आरंभ कर भिन्न भिन्न क्षेत्र आपण कौन देखुं ओडिशा भली गोटे राज्य लगातार भाव में भिन्न भिन्न डिमांड कर गोटे भी डिमांड सेमती फुलफिल होनी आखि दृश्य भाव में देखो विगत 10 वर्ष धरिकी आम देखी आसीचु ओडिशा प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्र द्वारा अवहेलित हो आसी आ वर्तमान जदि आम कहबा से विभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति देइछंती ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसिले आम यह करूँ से करूँ आपंकर प्रथम आरंभ करवा आम सुभद्रा योजना उपरे सेटा ही आपंकर एमानकर गोटे मेन माने महिला मानकु समाने देखैथिले फोकस जे 50,000 टंका प्रत्येक जनकर खाता को आसीबो सेटा गोटे प्रकार से डिलेमा रे भी मध्य पकैथिले समस्त को मिलिबो ना जो माने योग्य हिताधिकारी मिलिबो ना काहा को मिलिबो स्पेसिफिक कर नथले तांको हिसाब रे किछि दिन तळे भी आम विवृत्ति देखुतलु उपमुख्यमंत्री कर भी समस्त को मिलिबो बोली कहिले गोटे प्रकार तेणु लोक गोटे आशा करिसंती सुभद्रा योजना आपनकर 2.15 लाख गवर्नमेंट पदवी पूरण हबो बोली से माने ओडिसा को कहितिले 31,000 टंका एमएसपी कथा कहिसंती 31 सॉरी 65,000 पदवी हां भत्ता 3,000 टंका भत्ता वृद्धि सेटा भी गोटे लोक चातक भलिया चाहि कि बसिचंती से जिंस को आपनकर 65,000 पदवी 2 वर्ष मध्य पूरण हबो बोली कहैछि आपनकर 25% लक्षपति दीदी जो कहते आपनकर से तैयारी करेंगे 300 यूनिट बिजुली मागणा 10,000 जो फिशर में आपनकर मत्स्यजीवी मान 10,000 अलाउंस गोटे वन शाखा दिज्व बोली कहुई 75,000 किलोमीटर जो रूराल आउ स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्शन करेंगे कहते तो जो गुड़ा कि पंचायत हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो आउ स्टेट कैपिटल्स को जोड़िबो बोली समाने कहते तो एमिति विभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति समाने देइचंती ता भीतर भी पीएम सम्मान निधि रे अधिक बढ़ाइबे बोली ताको बढ़ाइबे बोली लागू करिवे ता आगो को पुनी आपनकर आयुष्मान भारत योजना से ताको पुनी बिजू बीएसके वाई संगे जोड़ीबार तांकर योजना एमिति बहुत गुडा को चैलेंज तांको आगरे रहिछि किंतु एते पर्यंत आमे तांकर ब्लूप्रिंट रे केवल देखिलु आपण जोटा कि आसी कि चारि द्वार खोली दबाटा जोटा कि हमन को पई संति कि डिफिकल्ट नथिला ताको मिसमैनेजमेंट करके खोली देले गोटे रत्न भंडार रो को टाइप रो सर्वे होछि सेटा हम जानि ना हुआ गया सेही दीटा को नेकी समाने वर्तमान भाबुचंती आमे हमर सब प्रतिश्रुति गोटे प्रकार पूर्ण करि सारिछु किंतु वर्तमान देखिया को बाकी रहिला 25 तारिख दिन को प्रकार बजेट आम एलोकेशन हो पड़ी जो सब प्रतिश्रुति से माने देइथिले ताको पूरण करिबारे सरकार केते मात्रा रे समर्थ होउचंती आशा तो करूछु माने जो भले आमानकर कथा गोटे काम आउ गोटे सेही जिंस ही हेई आसीची तणो आगो को देखिया को बाकी रहिला आमे डॉक्टर प्रदीप पंडा ए सब भीतर जो ओडिशा जतबेले पैसा मागे केंद्रीय मंत्री माने कहंती कि 5,000 कोटी कि 14 लाख कोटी कि 5 लाख कोटी कि केतबेले कोन कहंती किंतु फंड जाउची
पूर्व सरकार खर्च करि पर नहीं बाटमारण हो एमती बारंबार अभियोग से आनती एथरक फंड को लेकिन कौन आपण संभाव्य मंतव्य देखुंती बा फंड आसवा को लेकिन कौन देखुं देखो एथर जिते आमर स्टेट बजेट आसब चीफ मिनिस्टर कहते 3 लाख कोटी टंका छुईब जदि 3 लाख कोटी टंका बजेट छुईब लास्ट ईयर बजेट था 2,55,000 कोटी 45,000 करोड़ एक्स्ट्रा दरकार एते बड़ा पैकेजटा प्रथम एक्सपेक्टेशन अच्छी आउ आम सब बेले कही आसचु कि आलोकेशन जिते नंबर कहुए 18 लाख कोटी देदेलु 14 लाख कोटी देलु प्रथम तो नंबर समस्त अलग था सहित से जो आलोकेशन एक्सपेंडिचर कहीं कहते रेलवे रे 10,000 कोटी देदेलु खर्च 2,000 कोटी सबू सेक्टर रे सेमती अच्छी से देखा पड़ा आम आलोकेशन एक्सपेंडिचर केते होची आपण देखो आलोकेशन आपण सबुठ कर आमर बैंकिंग डेंसिटी सबुठ कम आम इंटरनेट डेंसिटी सबुठ कम टेली डेंसिटी सबुठ कम रोड डेंसिटी सबुठ कम 8टा जिले में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं आमर 2,000 ग्राम पंचायत बैंक ही नहीं 2,000 ग्राम पंचायत बैंक ही नहीं यही जो जिनस गुड़ा अच्छी स्पेशल आलोकेशन देबे आपण जदि कहउचंती स्पेशल आलोकेशन देबे आपण एई जिंस को डेडलाइन सहित नेबे जदि आपण कहउचंती रेलवे रे 1 लाख कोटी 5,000 5 वर्ष देबे खर्च केते करिवे सेटा आपण देखिबे केते कंप्लीटली आपण कहउचंती आपण देखुथिबे सब रेलवे प्रोजेक्ट अधा पंतरे रे पड़ची सब रोड प्रोजेक्ट अधा पंतरे रे पड़ची खाली आलोकेशन कर दोचे पुनी आसुनी कोस्टल हाईवे तो बहुत दिन रो हमें तणु एबे आ गुटे कोल रियलिटी कथा खाली मना कले सुप्त मिहिरा आपण पाखु गोटे खनि खादान भरा राज्य ओडिशा ओडिशा रे आपणकर जो माइनिंग रेवेन्यू सबठु अधिक एवं ता भी सेंट्रल शेयर आपण जो देखिबे से माने अधिकांश ओडिशा रु सही क्षेत्र नउछन्ती आपणकर ए ट्रेडिशनल इनकम छडा ओडिशा पई समानकर आउ किछि जेहेतु नुआ करी सरकार आछन्ती डबल इंजिन कथा आपण या पूर्व उल्लेख करथले स्वाभाविक भाव में ओडिशावासींकर आशा रहिबो जे बजेट रे ओडिशा पई भी किछि स्पेशल फंड एलोकेशन हो सेमती भी आपण आशा करूछन्ती कि नहीं डेफिनेटली से माने निजे वर्तमान के राज्य सरकार के जो राज्य बीजेपी दल पक्ष जो दाबी जना जाइछि से माने निजे आपण देखंतु माने आपण प्रथमे जो पॉइंटटा उठेले मु ता विषय टी कहि दिए जे सेटा होछि जे कि कोल रॉयल्टी 10 वर्ष देखंतु कोल रॉयल्टी प्रति 3 वर्ष रे रिवीजन हवा कथा आमे एटा को दाबी करि आसछु आपण देखंतु लास्ट 12-13 वर्ष हो गलानी ए कोल रॉयल्टी रिवीजन हेइनी ये सरकार आसीबा पूर्वर 2 वर्ष पूर्व जहाँ होता आपण ता परठारु आउ कोल रॉयल्टी रिवीजन एबे एबे ताकू मना करचंदी हबो नै देखंतु कोल रॉयल्टी जदी रिवीजन नै जाउची ताले आमे 40-50 हजार कोटी टंका रो गोटे बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट पाई परिबा सेटा को बंद कर दउचंदी द्वितीय कथा आपण देखंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे कथा जे कि जो सुभद्रा योजना जोटा मैडम कहते जे सुभद्रा योजना को लेकिन बहुत माने प्रचार प्रसार करा जाइथिला आज देखंतु जे ये जो सुभद्रा योजना कथाटी तांकर जो मैनिफेस्टो रे लिखा जाइछि आज जो सुभद्रा योजना पई आर्थिक सहायता जो मागुचंती ता माने एथरु स्पष्ट होछि जे कि सुभद्रा योजना नै किरी तांको पाखरे किछि गोटे स्पष्ट नीति नथिला काहे कि ना सुभद्रा योजना रे केमिति आज धरिका जदी आपण के कहा को देबे जेमति मैडम प्रश्न करथिले कहा को देबे केमिति देबे तार क्राइटेरिया कोन रहिबो जदि आपण बीपीएल परिवार रो प्रत्येक परिवार को जदि जणे महिला को देबे ताले आमे जो बीपीएल हमर जो बीएसके बेनिफिशियरी अछंती 96.5 लाख फैमिली ताने जदि हमें 96.5 लाख फैमिली दबा तो एवरेज जदि गोटे कोटी महिला को दबा ताले 50,000 कोटी टंका हम खर्च करिया पड़िबो 2 वर्ष रे 50,000 कोटी टंका कोठु आसीबो परिकल्पना तार गणित माने आदौ करि नाहंती ये गोटे निर्वाचन रे गोटे चकमा देखिबा गोटे जुमला देखैबा पई ताकू करिसंती वर्तमान निश्चित भाव में जानुचंती जे कि ये जो आर्थिक बोझ राज्य सरकार राज्य राजकोष उपर पड़ो ताकू केमिति सुभद्रा योजना को लेकिन फ्रॉड भी गाँ गली रे आरंभ हो गलानी ता भितर हमें खूब कम समय भितर आम टंका आय व्ययर हिसाब अच्छी देखा टंका आय ऋण और अन्य उत्स 52% आसुची आयकर 25% केंद्रीय अबकारी शुल्क 5% कॉर्पोरेशन उत्पाद शुल्क 2%
जीएसटी अन्य कर बाबद 18% और अण ऋण पुंजी 2% और अणकर राजस्व जो रही ये हूँ 32%। तेणु ऋण और अन्य उत्सर अविनाश सर्वाधिक आस 52% एक आम देखा मिलूँ आय क्षेत्र में। अविनाश आपड़ जो 25% आयकर देखिले मुझे पूर्व उल्लेख करूँ जीएसटी गोटे समय 2 लाख कोटी टका गोटे मस आवश्यकता टार्गेट टू यथेष्ट अधिक आप कलेक्शन कले जीएसटी किंतु से अनुपात में आपंकर प्रो पीपल प्रो गवर्नान्स स्कीम सब कौन रही एपर्यंत नुआ स्कीम किसी आसला कि से सेक्टर पर सोशल सिक्यूरीटी है आपंकर डिजिटल रिफॉर्म्स है एग्रीकल्चर है हेल्थ केयर है ये सब क्षेत्र पर कौन अधिक आसी मेरा आप लास्ट सार दिंतु आम तापर बजेट को जीवा गोटे मिनिट पाखापाखि अच्छी ये जो सेक्टर गुड़ाक जदि आप जीएसटी कलेक्शन आपंकर टार्गेट भी अधिक कले आयकर टार्गेट भी अधिक है भी आप फंड नहीं देखो बर्तमान देख केंद्र सरकार जमी गोटे जो ये जो गोटे पार्टनरशिप केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ गोटे सामग्रिक दायित्व किंतु एठी आम जोटा देखुचु जो केंद्र सरकार जो एटीट्यूड रही जो राज्य प्रति माने सेमाने जेमती गोटे महाजनी टाइप रो गोटे एटीट्यूड करछंदी जे राज्य भिक मागुथबो राज्यर पैसा केंद्र सरकार को जाउची राज्यर प्रत्येक राज्य राजस्व आकार से आपण इनकम टैक्स कहतु बा जीएसटी कहतु राज्य जाउची एवं से टोटल सीधा पैसा केंद्र को जाउची किंतु जेतेबेले फेरिबार कथाटी होउची एठी राज्य सरकार मान को हाथ पतेयक पड़ुची ये जो महाजनी जो एटीट्यूड रही केंद्र सरकार एटा गोटे निश्चित बाचस्पति ओम बिरला पहुंच गले आसन ग्रहण करुछंती बाचस्पति ओम बिरला ये बजेट अधिवेशन समस्त सांसद माने उपस्थित अछंती गृह कार्य आरंभ होई जाउछि एवं खूब शीघ्र बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री ये चित्र संसद रु सदस्यगण मुझे अपनी ओर से तथा सदन के मान्य सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ आईपीयू की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन बजट सत्र को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है। माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मान्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support
faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions.
A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture
and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. $1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes
and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice, saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing
recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs.
A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in trades. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the trades platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SITBI branches in MSME clusters. SITBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs. To enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets, e-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain
They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, Patty. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery.
Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle-class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it.
Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavour to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched
to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists, and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi, or the 7 hot springs, form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship,
wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with the states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land-related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered
in these services. Shram Suvidha and Samadhan Portal. Shram Suvidha and Samadhan Portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans, and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings
through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavour to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of customs duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year
touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavor to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax
regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the Finance Bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and tedious. Two tax exemption regimes. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% tedious rate on many payments is being merged into the 2% tedious rate, and the 20% tedious rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. Tedious rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize delay for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax
including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending an appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in the tax tribunals, high courts and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction
under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान समय टैक्स उपरे आसुची आश्वस्ति आयकर दाता 3 रु 7 लाख टंका जाए आय उपर 5% रही 7 रु 10 उपर रही 10% एवं स्टैंडर्ड डिरेक्शन रे वर्तमान समय 50,000 रु 75,000 ताकू करा जाइछि रिहाती को एवं आमे टैक्स रो जेतबेले चित्र सामना को आडुछे 15 लाख उपर 30% रही आयकर दाता आश्वस्तिर खबर सामना को आसुची स्टैंडर्ड डिरेक्शन रे वर्तमान समय 50 रु 75,000 को बढ़ा जाइछि 3 रु 7 लाख टंका जाए आय उपर 5% टैक्स 7 रु 10 उपर 10% टैक्स रही एथि सहित 10 रु 12 लाख जाए आय उपर 15% टैक्स रही 15 लाख उपर a number of sectors, right from agriculture, manufacturing to services, were not potential. It is focused on continued thrust on public capex, focused on very important areas like agriculture, MSME, skilling, employment. A lot of focus on this ease of doing business. किसी करिवे से सब प्रतिशत जहाँ आज देखा मिलला कि जो दुई राज्य बिहार एंड आंध्र प्रदेश को विशेष मान्यता मिलला आज पार्लियामेंट रे किंतु से हिसाब रे ओडिशा को विशेष किसी आम देखा पाइलु नहीं हुए तो रेलवे बजेट आसिले जना पड़ो कौन होची यही बजेट रे ओडिशा पे किसी स्पेशल प्रावधान नथिला केवल थिला आमर टूरिज्म सेक्टर पाई ओडिशा रो किसी एरिया को से माने आइडेंटिफाई करछन्ते कि एकटा गोटे वर्ल्ड क्लास क्लस्टर तैयारी हो पारिबो नाउ आपनकर क्वेश्चन बजेट को आप केमती देखुछन जेमती कहली मु एवरेज देखुची आमर समस्त प्रतिक्रिया जहाँ है यही बजेट को समस्ते एवरेज भाविले आमे 1 to 10 स्कोर रे 6 नंबर आमे देवा को चाहूँ एटा जो प्रतिक्रिया आप इंडिविजुअली और समस्त को पचारि पारती सेमती अच्छी बट एवरेज जहाँ मुझ समस्त पाइली आमे या 1 to 10 रे 6 मार्क्स देवा नाउ ये जो मेजर जो इश्यू है जोटा आम आज देखिलु कि फिस्कल डेफिसिट को जोटा कि लास्ट टाइम 5.1% थिला ताकू 4.9% करिसंती एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप सरकार धीरे धीरे तार वित्तीय घाटा को कमेवा लागिसंती और आशा भी कर स्टेटमेंट कहूँ प्रति वर्ष सेटा को कमे कमे चलिए दैट मीन्स खर्च उपरे कंट्रोल करेंगे विशेष लोन नेबेनी बाहर आसबनी और ये घाटा जोटा चली कमेबे दिस इज अ वेरी गुड स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन तो एंड तापरे मु देखिली कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स उपरे बड़ा गुरुत्व दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स तो दे ना किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे जो प्रावधान रखिंट मु भावुची जदि डिसमिनेट करा जीवो स्टेट लेवल रे ओडिशा मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर रे किछिटा पाइबो स्पेसिफिकली कहि नांती किंतु मु भावुची आमे आमे सेथरे पाइबा किछि ना किछि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे ऑफ कोर्स से माने किछि विशेष प्रावधान देइछंती इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम्स ड्यूटी कमेवार करछन जेंति कि हमर शिल्प जेंति और कॉम्पिटिटिव हेई परिबो तो गुड़ाए कस्टम्स ड्यूटी से माने ताकू ये करछंती माने बढ़ाइछंती सो दैट वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव so this is a one good sign that Indian industry will become more competitive particularly in the metal sector जोटा कि एंड क्रिटिकल मेटल सेक्टर जोटी रेयर अर्थ जोटी कि हुए तो ओडिशा भी किछिटा पाइबक जेहेतु आप जानते गोपालपुर रेयर अर्थ आमर प्रचुर मात्रा रे पा जाए तो रेयर अर्थ निकेल कोबाल्ट क्रोमियम ये जो लिथियम ये जो रेयर मिनरल्स अच्छी जोटा कि फ्यूचर मिनरल्स जोटा कि कैपिटल क्लाइमेट चेंज पाई साहाय्य करिवो सोलर पैनल तैयारी करी पाई सोलर एनर्जी को बूस्ट करिया पाई ता उपरे बहुत गुरुत्व देइचंती क्लाइमेट चेंज उपरे भी सरकार रो गोटे ध्यान रही जोटा कि भारत वर्ष गोटे कमिटमेंट नेशनल लेवल रे स्टेट लेवल माने कंट्री को कमिट करी आस्थिले भारत प्रधानमंत्री ग्लासगो रे और लास्ट टाइम दुबई रे मध्य कि आमे हमर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को
45% लेवल को नहीं आसबू बाय 2030 2005 लेवल रू सेटा को करिया पई जहाँ मु देखुची क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट एक्शन प्लान रे गुड़ाए प्रावधान रही बाकी आमर ट्राइबल अंचल पाई करिसेंती ट्राइबल स्कीम गुड़ाए आगु को आसीबा को जाउची जोटा कि से चुंबक रे ठेक रे जणैले एग्जैक्ट स्कीम पर जेतेबेले डिटेल्स आसीबो आम जानि परिबा तो एटा हम मोर बंधु संजीव को कहबी से या को रिएक्ट करिवे एमएसएमई एक्सपर्ट अछंती से एनीवे आप कोन तो सेठी कोन तो आसीबो सुबिबा देखो एमएसएमई मु जने एमएसएमई मैन्युफैक्चरर किंतु एमएसएमई ऊपर जी आमर आशा थिला मु भावुची आम शारदा सार जमी कहले सेटा को आम 5 रेटिंग दब एमएसएमई रे आमर गोटे हूँ मुद्रा लोन बढ़ी आ गोटे से जो कोलेट्रल सिक्यूरीटी जोटा बढ़ई जोटा 100 कोटी जो टर्म लोन रे सेतिकी मिली बट कौन सी गोटे रोड मैप क्लीयर रोड मैप ना एमएसएमई जोटा कि आम एक्सपेक्ट करूँ बहुत किसी अच्छी एमएसएमई मार्केट लिंकेजेस अच्छी एक्सपोर्ट अच्छी जो थे क्लीयर गोटे रोड मैप ना आम एक्सपेक्ट करूँ एमएसएमई गोटे स्पेशल एम्फासाइज देकरी गोटे स्पेशल बजेट एलोकेट हम ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जोटा कि क्वाइट क्लीयर ना एवं सबुठू निराशजनक हूँ आम एक्सपेक्ट करूँ कहीं आम एथर 20टा एमपी देलु ओडिशा 20 जन माने 21 ठार 20टा एमपी आम जाइलु तेणु आमर टिके निराश लगुच कहीं पर्टिकुलरली आम एमएसएमई एंटरप्रेन्योर मान जे गोटे रोड मैप आमको दरकार क्लीयर रोड मैप जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट हुए तो रिफ्लेक्ट करेंगे बजेट रे जना पड़ो किंतु यही दुईटा छड़ा आउ क्लीयर कट कौन सेमती गाइडलाइन ना एपर्यंत मु भावुच तेणु गोटे क्लीयर रोड मैप सरकार देला परे जना पड़ो जे एमएसएमई रे कौन बेनिफिट आम फर्दर बेनिफिट पाइबू अपार्ट फ्रॉम दिस टू मुद्रा लोन बढ़ी 20 लाख 10 लाख रु हाँ एग्जैक्टली सेटा कंडीशन जोटा प्रथम क्लीयर करथिबो ताकू 20 लाख मिलिबो तेणु सेमती नहीं कि हाँ जदि किसी प्रॉब्लम है कौन है